लिंक इस पे गूगल इस पे आती है, यूट्यूब पे आती है, यूट्यूब की लिंक शेयर करते हैं। देख चालू हुआ क्या? देखियो जाए। बट मैं करूँ, मेरी हाइट ज़्यादा है। ऑफ हो जाए ना फोन जल्दी। What a shot! चक्का है, बाहर है। शुरू हो गया देख इसको देख शुरू हुआ है तो 95 हो गया। 33 भानु भाई। देख तो नहीं हुआ है अभी शुरू। क्या कैप्टन इनिंग खेल रहा है भानु। लवली बैटिंग भानु प्रताप। एक नयोदरी शुरू तो हो गया इस पे। हाँ शुरू हो गया शुरू। 86 वाला है ना? नहीं ये नहीं है, नहीं ये पुरानी वाली है। इस पे जाके क्लब्स पे जाके हाँ ये इसका लिंक दे शेयर पे। एकदम लाइव करिए इसको। हाँ यही है, शेयर पे जा। Welcome back guys, and sorry for the delay and sorry for the interruption in the commentary, and now we're starting again, and it's 16.3 for 99 for 6. SRH is 99 for 6, and Bharat Yogesh, the captain, has come into the attack again, and in the first 3 balls he has conceded 10 runs, and captain versus captain is head to head in captain versus captain. Bhanu Pratap is facing the ball. 4th ball, he's going to face the 4th ball now. And I'm joined by again Prajit is joining with me. So short ball, wide short ball, and a single, easy single. Prajit bhai. बिल्कुल perfect. The way the captain is playing is just tremendous. He's just he's putting an example in front of everybody. जो 10 ओवर पहले के 10 ओवर में आरसीबी का जो एक्साइटमेंट और गेम का व्यू था, अभी उन लोग को देखेंगे तो देयर शोल्डर्स आर डाउन, इजी रन्स खो दे रहे थे। ऑलरेडी 100 हो गया अभी, 101 आरसीबी के कैप्टन इससे पहले का ओवर में 16 रन दिए थे। He's a bit expensive today. I know there's a lot of things going on in his mind because he's the captain. He needs to take care of. And also he knows that his key player Bharat Kumar Kairaju, I know he is not performed as he is expected to in this season. And to be very honest, in this season's top 10, if you consider the ACA players, last season in the top 10 there were only ACA players. This time in the top 10 they are not only ACA players, they are just ASUPL players who just play ASUPL. In this season, I think the opportunity and the matches and the players who have performed and who stood up are not just the players who play regularly in football, but the players who are just playing fun at ASUPL. So ASUPL is for everyone. It's true. ASUPL is for everyone. It's not just for the ACA players who play leather ball. And I mean, we're growing as a family together in ASUPL, and it's commendable what we've achieved in the past 3 or 4 seasons that have happened so far. So I think Prajit, you should say something in Telugu before our South audience who've come up and joined us in this live stream. Definitely. ఎట్లయితే భాను అన్న క్యాప్టెన్ ఇన్నింగ్స్ ఆడుతున్నాడు షాట్స్, ఒక టీమ్ని ఎలా తీసుకెళ్ళాలి, ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అనేది ఒక పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లాగా ఉన్నాడు. ఆయన స్పిరిట్, ఆయన గ్రౌండ్లో మాట్లాడుతున్నాడు, ఆపోజిట్ ప్లేయర్స్తో మాట్లాడుతున్నాడు, ఎట్లయితే వాళ్ళని టాంట్ చేస్తున్నాడు, వాళ్ళని గెలుపుతున్నాడు, చూపిస్తున్నాడు వాళ్ళకేందో. నాకు మ్యాచ్ ముందుకి వీళ్ళ ఫస్ట్ గేమ్ ముందు ఆర్సీబీ గేమ్లో Another catch in Kshitij's hand, and today Kshitij takes it. This time was no mistake and catch. He was having a bad day in the field today so far. He dropped one this time he took the catch, the most important wicket right now for SRH, their captain, and Bharat Yogesh strikes. Did Bharat Yogesh take a it was Danish, I guess. Danish was bowling the over. Yeah, Danish takes him. It was only Danish's over in which Kshitij dropped
Bhai's wicket, and now it's Danish's over in the same spot. So I mean, a wicket is a wicket whenever it comes, and now the big fish, Harshit Neelapa Reddy, who scored a century in the previous ASUPL season, and that game was only of 15 overs. We're also joined by KKR's captain, Amok Dagar, and we would like him to say a couple of words about this match. What's happening on the match? Thank you guys. Thank you Adi bhai for having me. Thank you Pradeep bhai. So this ASUPL has been plagued by everything you can think of, from not getting ground availabilities, from like not squads not having enough time to practice for so many playoffs that have taken place in the past 1 week. And personally speaking too, this is the first time I'm back on the ground, say like from the time that we failed to qualify. But I think now the only reason I'm here is Bhanu bhai lift the trophy, not a commentator bias here. That is it. I played under him for Punjab last year. There's one man who, it's called, has nerves of steel. It's Bhanu Pratap. Correct. Definitely, that's what we've been talking around throughout this whole final. Me and Prajit, that Bhanu Bhai has shown extreme resilience. The control, the presence of mind this guy has, and he doesn't take. He's single on long on, and Harshit Bhai goes for a double. No. For that double. But yeah, good thinking by Abhijit Bhai. So it's last over, and after that 2 overs will be left. So I think Bharat Yogesh has one, and Prithvi Raj also has one. So I think these guys would be finishing the innings. Harshit Bhai, I expected a lot from this guy. Easy. He's playing easy. Dot ball. But I think that SRH are now in a position where they don't need to try anything fancy. Till the time these two batsmen are there, like, I think Bhanu Bhai will have enough calm on his mind to think about what they have to do in the next innings. Correct. I mean 120 is, I feel, is an above par score in this season, in this ground, because we haven't seen a lot of runs this time. We haven't seen a lot of 150 plus scores in this season like we saw in the previous season. So yeah, spring wicket and fall wicket, both of them are different. This wicket is for the bowlers, and the spring wicket is for the batsmen. Easy tap, easy single. Again, we see 3 players rushing for the ball. That's what happens in a final. This is the adrenaline. This is the joy that we see from the players. This will be the last ball of Danish Khan's over, and I think Bharat Yogesh would want him to take another wicket, because they still have 2 good batsmen on the crease, Abhijit and Harshit Neelapa Reddy. These guys can easily score 20-30 of the last 2 overs. Let's see. Last ball of the over. It's a good ball. Tried to take a single dot ball to finish the over. An amazing over, just giving 3 runs of the over and taking 1 wicket. It's an amazing 18th over by Danish Khan. Let's see who will be bowling the 19th over now. Last 12 balls to go. What is the prediction that you guys want to make? I personally think it's going to be 125 from now. So it's going to be another 20 runs in the 2 overs. And I think that's like a brilliant score that That's a SRH brilliant can score. put up. And it's going to be very difficult in the cold as well for the batsmen, because their body don't get heated up easily. And the body will be rusted as much as possible in this weather. So I personally feel above 120, even 121 is like very hard to chase. 120 is something that gives some confidence to RCB while chasing, because it's ball to ball. But then 5-6 runs above the ball to ball ratio is going to give like that was a brilliant effort. Amazing effort by Vineet Puttaraju. And they're stealing a double. There's a stealing a double. Oh no. The way looks like Harshit Bhai is making fun. He's having a good time there. He's trying to get RCB's, and that is what I was commending. Like, Danish Bhai bowled a brilliant over last over,
but he gave 3 runs. He took 1 wicket. Still, Harshit came. You didn't see those, him throwing away his wicket or going after every ball. He took his time, he defended. And now I think players are there. Even 50 runs in this crucial moment, is good enough to give both the fighting for the tournament. Plus Harshit Bhai knew that it was Danish Khan's last over and he won't be bowling in the... Oh, it's a cotton ball. He drops it. It's a big wicket. So Harshit Bhai knew it was Danish Khan's last over and he knew the last 2 overs will be bowled by any other 2 from Danish Khan. So he defended those 2-3 balls, took his own personal time so that he can get, comfortable. Just understand it's a final, it's the last. You don't, as a batsman also, you don't want to feel comfortable after the first 10 balls. You just want 2-3 balls to just find the ball and then you're set. It's a final. So a big shot, grounded shot towards deep mid wicket. He's going for it up. No. He's just being like, cheeky. He's just being cheeky, Harshit Bhai. He wants RCB players to do a mistake. He's trying to pull their leg. He's on their nerves right now. I think a couple of balls is enough for him to hit. Two big hits, 12 runs of 2 balls. Oh, nice ball, nice ball. That's what a lovely ball. Appeal for hand and is it body or is it from bat? Okay, no, nothing from the umpire. So it's a run. It's a legal run. And then we'll be proceeding towards the last 2 balls of this over. Only 3 runs given of 4 balls. This is commendable. This is from the penultimate really over, just giving 3 runs of the first 4 balls. It's amazing. This is some really, really good bowling by RCB in the last couple of overs. Let's see what happens in these 2 balls. Shot. That was a shot. That was a good shot. Again to its deep square leg, another single. Singles won't hurt RCB at this point. Singles won't hurt them because it's the penultimate over. The thing right now you want is not giving boundaries. That's it. You just don't want to give boundaries because I know RCB is a very good team when it comes to running between the wickets. These guys will make doubles out of the singles. So a big shot from Harshit, and is it going for a 4? There's a fielder behind. Good fielding by deep square leg. But Adi bhai, I disagree. I think even for SRH, they don't need to go for those 4s because the 2 batsmen that are there, they have played cricket. Yeah. But they are seasoned players. Yeah, they're seasoned So it's like players. even if they are there, even if they're rotating the stick, which they are trying to do on ball, Correct. that will give them more 7 runs. It can be crucial, but what if they get out and the fielders get under pressure? Yeah, because you just have 2 wickets in your hand and last 2 wickets batsmen. Exactly. Last unit of batsmen that are here. So absolutely bowled by the captain himself, Yogesh. He has given pretty much his above his 11 per over. He's giving 11 per over. Let's see what happens this over. I think there are a couple of 4s and 6 that is going to be considered in this over because he has been expensive to be honest. Really This innings he has been expensive. But that is what the captain's gut is. That is a sign of nervousness in my opinion. Yeah, correct. If the captain is using his power to come and bowl the last over himself, then on paper he's not had one of his best days. Looking at the player he is. Correct. So I think this over will be pretty exciting to see how everyone And plays. Harshit Bhai will go in this over. He'll go full steam and you see a big not shot going over the on long boundary. on. Shitesh is under the ball and Shitesh drops it. That's a drop. Is it a no? Shitesh drops another one. Second drop from Shitesh in this innings, and this is not in the final. This is not expected one of your good fielders in the finals. And Shitesh, he hasn't been good. I think there was also the innings. run-out chance that he could do. Yeah. He was so this is what pressure. Oh, another big shot. See, this is what's gonna happen. Each and every ball. The same strategy that was Correct, there in the correct. previous over. Get those 6 runs. They are more important than adding that pressure of hitting a boundary Correct. and then losing your wicket, because a wicket and a dot ball both will be very Correct. Third ball. Shot and it's on the long off. That's just gonna go for a single.
just a single. So 3 balls and just 2 runs and a drop catch. So it's in last over offense. It's all happening. Harshit Bhai is on strike. SRH's team would want 2 sixes from him in the last 3 balls. Big shot. Big shot. Easy, comfortable single. That was a lovely throw. Lovely throw. I mean, he knows that he would go for a double. To just restrict the double, he needs to be quick. He needs to be fast. Okay, last 2 balls, just 3 of this over. Commendable. The previous over was also nice, just giving 4 or 5 on the last, in the penultimate over. That was a shot lovely over extra covers. And that's a boundary. And that's a 4. That's a Beautiful boundary. shot. That was a Beautiful lovely shot. This is what we were speaking about. 2 balls, 1-2 balls are enough to get back into the game. Now it's 117 and 117 for Look 7. at that shot. I could watch that shot Every all day. Every Correct. batsman, when they're young, they dream of playing that cover drive, and to Oh, hit covers, it with yes. this hard tennis ball. I think you should give credit to the batsman that he's played Correct. this shot. Definitely. he's a wonderful player. He's okay. Oh, that's cheeky. That's cheeky from Bharat Yogesh. That's smart. Good spirit of the game. Good spirit of the game. Spirit. Sportsmanship display, and it's the final ball of this Adi innings. bhai and Prajit bhai, now that we saw this in this final, like, what is your stance on? I mean, we always see this kind of this thing in every ASUPL, right? Last season, Adarsh Reddy, to be very, we saw very Adarsh frank. do the same thing, and he's bringing the field, he's changing the field. Okay, there's a deep extra covers now, and fine legs up. So good change in the field, I feel. Good change. All the But then, fielders are in the straight. If It's you, a if you straight. look last wicket, like, it was unnecessary. If you Big really just see. gone up in the Again, Wow. going for one more. Not a boundary. That was some lovely things that happened. Two fielders collided and they're in deep pit. Looks like they're badly hurt. They hit their heads together. But then, to be really frank about the anchoring that was happened, I think that was not, because that was the last ball, and then it was just not worth. How can you out a there's like no point you strike on the last ball. It's like just senseless. It was just baseless, and come on. Okay, but then I agree it was part of the game. But then, true enough, it was a really good way. Would like to appreciate Harshit Bhai as well for showing that spirit to the bowler. Just want to show the competitiveness. It's like both the players are really we saw injured and big bad collision. pain. That was a Collision, the big last collision. ball. And see the total, Prajit. It's 120 for 8. That's what. That's Come what. on, It's 121 it's an really, above really, par score Yeah, for me. yeah. If you ask me, it's an above par Definitely. score. I feel- Anything close to 120 is difficult. I mean, we've seen run-up totals also get chased. In I remember myself when I see him. okay, so Manas bhai, the secretary of our club, has joined us, and he was umpiring throughout this whole innings of SRH. So we Good would like to umpiring, hear Manas something bhai. from him. What he felt. He was there on each and every ball. He was on the ground. He looked at the ball. So we would like to ask him. So Manas bhai, good word from you. इसको नीचे क्या कर. इंटरव्यू ले उसका I am good. अरे आ तो आ जाओ, आ जाओ मानस भाई आ जाओ. So, What do you want to ask, man? So First of all, I like that. Very good. what spec for this flower? I got it from Yugan. Yugan gave it to me. That Yugan gave me. Manas bhai, Yugan's only contribution to any team, correct. this correct. season. So Manas bhai, खिलाना पड़ता है. Every ball. What do you feel? Is 120 enough or are they depend on runs? I think 120 is a very good total over here. Considering it's a final. Team will have to continue fielding. सुन ले कैप्टन Field well, I think. दोनों कैप्टन को बोला क्या जल्दी से But again, it's not a huge track. Shamin bhai, यस भाई the other umpire who joined Manas throughout the innings. So Shamin bhai, what would you like to say about the wicket and total?
and how SRH have played in this innings? The top orders of SRH was not that great, but as the captain has played, he has as he can. And I guess this is 120 is actually a defendable score. So and in this pitch, 120 is actually different. So here it's like RCB has to play very well, just getting down in their bowling. Then only RCB has the chances to win. Otherwise, SRH are in a very great Not on the back. एक और फेंक दिया यशवंत को साइड डालिए जरा. उठा लेना यार, वो लगा दी इधर. अंपायरिंग कर. यशवंत इधर. यशवंत मैं Heading towards the umpires. to the team's pavilion. Yeah. Oh, sorry. We're heading to the team pavilion. Okay, so we'll get Chandra bhai on our show today. Yeah. So, Chandra Come bhai, here, sir. Come here. Come here. क्या कर रहे हो? यशवंत अबे तेरे इसमें वो वाईफाई चलता है कौन सा है? इधर तक. Okay, यशवंत से बात करेंगे. So come ahead. So what do you think about the situation right now? Is 120 good enough, or are they shy of about 10-20 runs? And how did they play SRH? What do you feel like? No, SRH played really well. So basically the pitch is batting pitch. All the Yeah. balls are coming towards the bat. So 120 is a decent score. But Okay, so you feel that the pitch is a batting pitch? Yeah, and it's a batting so you pitch. think they could have scored around 130, 140? 130, 140 would have been better, but actually he had runouts were But SRH held on to their main wickets Yeah, for that- the end. But that I partnership- feel, personally, I feel in the last 2 overs, in this penultimate over, the 19th over, only 4 runs came. Yeah. So that was game changer for RCB. Otherwise, I mean, SRH could have easily scored above 130. Yeah, 130 would have been a good score, but yeah, we have decent bowling, so 120 is something that we're very confident that we can. You are constantly saying we have, weren't you? Okay. You are in KKR, right? I am Your KKR, but captain- heart your is with captain is- SRH. My heart is with Your SRH. captain is right in front of कैप्टन का भी एक का हो, एक का हो. Heart is also SRH. yes. Talking about captains, where is captain? Kedar bhai is also there. So half of the KKR team is already here. Supporting And- SRH. He's no longer my captain. I'm not obligated to be here. Half of the obligated to be here, but till I have faith in any team till the time he's there on the ground. Like there are even people in the team. One is Manu Bhai, and 10 people execute on Manu Bhai. Really amazing. The presence of mind he has, and also the resilience he has, and he doesn't take pressure. I have never seen him take pressure. I have never seen him get angry on the field or even fight with any player. You know, in this tournament, to maintain your Composure, yeah. composure and not lose Temper. it on the ground, that's a very big deal. And like a lot of matches, like there have been questionable decisions that many people thought from umpires, but still I've never seen that man object to anything. He accepts whatever decisions, he executes, and that is why he's here. Correct. So I would like to call Abhijit bhai. Abhijit bhai, come now. Abhijit bhai came in so late, just 2 or 3 overs left when you came in. What do you feel? Could you? I mean, if you would have been there in batting in the initial overs, would that have made a difference, or are you happy with the total that the team has come up with? No, this is absolutely fine. Because, the main point at the last when Banu got out, it was just to hold the wicket in one end. Because I have full confidence in Rashid's going to clear the boundary. I don't need to lose my wicket since I have to play one more wicket. So that's the reason I just kept my wicket, and once it's the last over, you just got to go. Personally, I loved that shot over the cover. That was an amazing shot. Beautiful batsman's drive, and he could have to watch. The eyes. He's also one of the main bowlers in the league. What do you think your strategy will be against this team? I mean, against this tour, it's run-up ball.
totally run the ball, 120 or 120. Pure power. What do you think would be your strategy? Keeping the what do you feel like? It's the same thing. Like I don't think the first 3 or 4 wickets is going to be off the ball, so that the later on they can come and score runs, 10 runs or 12 runs per over. Yeah. And RCB is a very good team, so ball and field on point. Yeah. It has to be on point. Like we saw a lot of drop catches from their team. That has caused them at least 30 runs. Yeah. I'm pretty sure. So those are the mistakes we shouldn't do. And as the league progressed, our extras have been lessened and our catching has been good. Hopefully we can. Main bowler of Rohit wants to go for interview. Rohit bhai, come. He is one of the Vice captain. highest run Yes, speak Telugu. Prajit, Telugu interview. Rohit bhai. आ जाओ. Prajit and you. Top eating. Telugu interview. వాళ్ళకు కూడా పెట్టరా ఇంటర్వ్యూ వాళ్ళకు కూడా పెట్టరా రా గో పెడతానులే నీకు थोड़ा आरसीबी पे जाके मेन सिर्फ एसआरएच नहीं दिखा सकते भाई आरसीबी भी लेके जाना భరత్ భాయ్ ఇలా అయితే ఆడాలప్పుడు నేను కూడా పక్కనే ఉండేది ఇట్లా అయితే కోపం కానీ అగ్రెషన్ కానీ ఆ బాధ కానీ బ్రింగ్ దాన్ని టు టీమ్ ఇలా చూసారు వేరే టీం దాన్ని అది ఆ ఎక్సైట్మెంట్ ఆ కోపం భరత్ భాయ్ బ్రింగ్ దాన్ని బ్యాటింగ్ అద్భుతం లైక్ ఒక వన్ రేంజ్ మన లెవెల్లో వన్ రేంజ్ అసలు ఇలాంటి మళ్ళీ కెప్టెన్ ఇలా అయితే ఆ సిక్స్లు ఫుల్ షాట్లు ముఖం వెనుక పైకి వచ్చిన షార్ట్ బాల్స్ వచ్చిన ఫుల్ షాట్లు కొట్టడం అసలు ఒక వన్ రేంజ్ we would like భాను అన్న here 37 or 39 something 39 bro 39 it was very impactful the shots that you were playing were really amazing a true captain innings what do you want to tell about your It was long due, bro. Boys saved the best for the last. hey the interview come on boys come on Best for the last, and everyone chipped up. Like we are already under pressure. Like 4 wickets went down. Like we need to rebuild the innings. even you have to go for We MVP did that, and thanks to a lovely partnership with Yashwan, and we targeted. Yeah, we intentionally targeted their main bowlers to hit, so that they'll get panic. The best thing is they were never under pressure in the tournament. Really, we were under pressure in every game of the tournament. I know you guys fought it up Yeah, we fought it up. We are like really good under the pressure, and it's all comfortable. We are gelled together as a team very well. I've seen you speaking a lot to other players and like chirping them, meditating them, getting onto their nerves. What's the reason? That was just giving back, bro. We had it earful in the first half of the innings. When we played in the league matches, we had we tried to be respectful and we tried to be very calm, but respect is a mutual thing, bro. And best thing is we didn't like do anything personally. Like we just encouraging ourselves. That's it. We are not even demotivating the bowlers. That's a good thing, I think. I was right behind when you guys started. And it was like really it was really amazing. How well you prepared all the team members and encouraged and motivated, getting everybody taking one give them 100% आदि probably said this उनको बोल पिच पे समझ जा अरे ओ भाई Absolutely. I would also like I saw you like go checking the runners-up trophy just because it's it's not going to be on. That's why I just want to check. That was like insane. That was lovely batting. Nice talking to you. All the best. captain Okay guys, we're joined by RCB's captain Bharat Yogesh. This guy leads from the start. So Bharat bhai, what do you think? 120, is it a good total? I mean, your bowling unit was fine with 120, or you feel that you've given 20-30 runs extra? I think we were aiming for 100 runs, to be honest, at the beginning, but we bowled our first and was pretty good. But last few overs we leaked the runs. But I back my team. I'm very confident that we will chase this down pretty easily. So let's see how it goes. I mean, I feel that in the fielding, what is expected, it wasn't happening today. There were a few dropped catches, there were a few misfields.
So what do you feel of that? I mean, what do you think? I mean, everyone has a bad day or a good day on the field. We all know Kshitij is one of the best fielders in our team, and that is the reason why I keep him at the hot spot. Yeah, it's just a bad day, and I hope he recovers back and then shows some good intent on the field, on the batting side, and then score some runs and get the team on. About the batting, you're missing one of your key batsmen, Bharat Kumar. And what do you think? What will you be changing your strategy? And what do you think? What's your Just message run for a him? He's ball. watching. What's your Bharat bhai, you're watching. Hello, Bharat bhai. Yeah, but Yes, sir. definitely we will miss him. He was one of the best batsmen of our team. He was holding from one end and then the other batsman to play freely. But yeah, due to some circumstances, he has to leave. But it's okay. We have a good batting unit. We are well prepared for the game. And yeah, it's all how it goes and then see how it goes. But It's run a ball. And you bowled on this wicket. Do you feel it's a batting track or is it a bowling track? What do you feel? I mean, like? it's just like stay until for like first 20-30 balls and then if you stay and then you can see the ball pretty easily. So whoever bats for first 20-30 balls and then it's really easy for them. But first 20 balls, 30 balls are very crucial for them. So whoever goes into bat, that's what I'm telling my batsmen is that whoever goes into bat, play for 10 balls and we can change this down. So let's see how it goes. I won't take a lot of your time. All the best for the finals, Bharat bhai. Danish bhai. तो दानिश भाई नंबर 2 पे चल रहे हैं हमारे MVP में. क्या कहना चाहोगे दानिश भाई? कुछ नहीं, just there for the game. Try करता हूँ जितना खेल पाऊँ. दानिश भाई बहुत ठंडा रहते हैं. इनको मैंने देखा है कभी जब वो KKR के मैच में बहुत तगड़ी लड़ाई हुई थी. बट एक प्लेयर था जो इनकी टीम से नहीं लड़ रहा था. 2 भरत भाई, योगेश भाई और ये विनी भाई तो कभी लड़ाई करते ही नहीं है. विनी भाई सबसे कूल है हमारे, है ना? फ्रेंडली मैचेस वी आर जस्ट फ्रेंड्स राइट. दोस्त आपस में क्या तो होता है, एग्रेशन होता है मैच में, कोई प्रॉब्लम नहीं. पर इस मैच में क्या आपकी बैटिंग के वो शॉट देखने मिलेगा या नहीं मिलेगा? होपफुली मिले. होपफुली मिले. तो चाहोगे कि आपकी बैटिंग आए या क्या चाहते हो कि 120 ऊपर वाली बात? I'll do that. जितना तो क्या लगता है 120 इजी है या मेहनत करनी पड़ेगी या कैसा लगता है आपको? बैट्समैन को रुकना पड़ेगा इसलिए, बिकॉज हर मैच में दिस मोस्टली लाइक बॉलिंग पिच है. बॉलिंग पिच है. हर मैच में लो टारगेट भी चेंज नहीं होता. लाइक लो टारगेट्स में भी टीम विल गेट ऑल आउट अराउंड. करेक्ट. So batsman has to stay there and spend his time. So basically, if you can stay there, then you'll get extras. Like after some time, you'll be able to see the ball more clearly. Just like Correct. They played really well. Correct. In the beginning, their run rate was around 3 or 4. Correct. But they pushed it up. 7-8 ओवर 7-8 ओवर्स में 37 और उसके बाद 12-13 में सीधा They were also 5 down. It's not या करेक्ट. चलो दानिश भाई, ऑल द बेस्ट फॉर द गेम. देखते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में. So we are going inside the pitch again. RCB is going for the batting. So it's 121 for RCB to win, and SRH is on the ground. Loud cheers from the RCB dugout. Let's see what happens. अपन ये करने आए थे. चलना है? रोलिंग. भाई नया बॉल लेंगे. आयुष भाई के पास है नया बॉल, वो जा रहा है. इधर को इसमें नहीं बोलना है. क्या बता देंगे रिकॉर्डिंग. भाई इधर ही रखो, इधर ही रखो. भाई इधर ही रखो. उधर से अच्छा आ रहा है. क्योंकि इधर का विजन सही है. देखो इधर भी सब आ रहा है. नहीं यार, इधर आ जाओ, इधर रखो. Oh, wait now. Do something. ये एनीवेज जाने वाला है. लैपटॉप सर का तो. अबे नहीं, इधर मत बैठो. इधर में जो गालियाँ मत पड़ती है. बात करते हैं इधर. If you need chairs, you can take the chairs. Yeah, we will actually take. और उसको थोड़ा नीचे करेंगे क्या? नहीं, वो ऊपर से अच्छा लगता है एंगल. Just take one chair, keep one with us. SDFC only managed to give us 2 chairs.
What do you think must be the strategy for Ajit bhai? So apparently in the whole tournament, RCB was never under pressure. So, and also it's like too cold. The batsman is going to get rusty easily because the body is not going to get heat easily. And the way RCB bowled in the first half was amazing, but the SRH just pulled it off. 121 in 120 balls. At once the projected. Yeah. It looks easy, but then it looks very, very easy to chase 121 in 120 balls. But then if you come into like tennis ball, it's really different from the normal regular ball. And I think SRH can do a great job in their fieldings if they're on toss. Just if they don't give those extra runs and Extras are really important. Those extra runs, and if they're on point, on toes, on fielding, just give one if there's only one run, and if there are two, just respect the batsman and go on. Then I think they should be in a good way. But then but then RCB is also like a good team. We just can't say anything. 121. It's also not like a huge run rate, 6 for an over. If they play like really good in the first power play thing, then they can manage a pretty good run rate. SRH is good bowling unit as well as RCB, but the fielding is something that is not up to the mark. Let's see what happens. I guess we are beginning the innings now. Yeah, let's see what happens today, because SRH batting was not like this all the games, and today they showed some real good magic. So let's see what happens in fielding today. I think. And fielding, one important thing, it's really cold, and I guess the hands are really cold, and whenever you try to catch with cold hands, it but hurts. then I think all these SRH players play good leather ball. They've been playing previously. They're used to it. They're used to all this cold, and I know a couple of players who played like big tournaments. Kshitij is opening. Yep. The guy who just fell over here, that was bad. That was a real bad collision. But then they're showing good spirit here. Yep. SRH has like really good bowling unit, to be very honest, but then their fielding was something that was not on point until now. And let's see what happened, because Let's the see if batting there are was, any misfields from the same. Yeah, if they because this is like a final, they should be on point every single time. What do you think, Adi bhai? What's the strategy for the batting team over here? I mean, for the strategy, I feel like अगर मैं इस सिचुएशन में जाता हूँ बैटिंग करने, तो मेरा पर्सनली वो रहता है कि मैं या तो 2 टाइप से इनिंग्स खेलता हूँ अपनी. आई ट्राई टू प्ले माई इनिंग्स 2 टाइप्स. इफ़ आई एम फीलिंग कि बाउंड्री जो है, इफ़ इट्स नॉट सेट ऑन द ऑफ साइड, मैं स्कोर करने जाऊँगा, बिकॉज मेरा ऑफ साइड स्ट्रॉन्ग है, मेरा फ्रंट स्ट्रॉन्ग है. मतलब लेग पे मेरे लिए कुछ भी लगा दो, आई डोंट फील एनी प्रेशर और समथिंग. आई नो माई गेम इज़ इन द स्ट्रेट एंड इन द ऑफ साइड. सो जिस भी टीम के सामने अगर मेरे को फील्ड अच्छी लगेगी और मेरे को पिच अच्छी लगेगी, आई विल गो. बट अगर मेरे को लगेगा, क्योंकि मेरा प्ले स्टाइल बहुत सिंपल है, मैं इतना सोच के खेलता नहीं हूँ. एंड इफ़ आई फील दैट द पिच इज़ डूइंग एनी मूवमेंट, लाइक इफ द पिच इज़ बैड एंड विद द फर द बॉल इज़ हैविंग मूवमेंट, आई विल प्ले ईजी. बट दिस पिच इट लुक्स लाइक कि okay, the first ball, and Kshitij goes on the first ball. Good shot, man, good shot. 4 runs on the first ball. That's the intent that you guys need to show in a final game. That's the intent of a top class player. Kshitij, beautiful shot from Kshitij. Just bounced, yeah. He was here lying down on the ground. Correct. So correct. One batsman needs to score shots like this so that you utilize the power play, because you need to utilize the power play. You have 6 overs where there'll just be 2 fielders outside the 30 yard. So you need to utilize those power play overs. And another shot, and it's gone. It's gone. Another 4. Beautiful shots by Kshitij. Beautiful shots by Kshitij Majumdar. He's playing amazing. बॉल बुरा नहीं है, वो बॉल बुरा नहीं है, जिस पे रन गया. बॉल अच्छी डाल रही है यशवंत भाई, पर वही है, एक अच्छा बैट्समैन है सामने और पावर प्ले है, आपके पास बाहर फील्डर नहीं है ज़्यादा. और प्लस द बॉल दैट यशवंत इज बॉलिंग, ही नीड्स 2 प्लेयर्स इन द फ्रंट. वो शॉट नहीं डालते ज़्यादा, हमने देखा है,
वो ऊपर ऊपर रखते हैं बॉल को, तो उसलिए आपको चाहिए कि आप सामने के फील्डर अगर बाहर रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक अभी जैसे अभी फील्ड में चेंज हुआ है, लॉन्ग ऑफ आया है और लॉन्ग ऑन को अंदर खींच लिया गया है, ये अच्छा मूव किया है। एक आपने डीप मिड विकेट रखी है फॉर दैट शॉर्ट बॉल, तो वो अच्छा है, ये अच्छा चेंज किया गया है फील्ड में। देखते हैं थर्ड बॉल, वी गोइंग फॉर द थर्ड बॉल। कि बहुत शोर आ रहा है बाहर से, बहुत शोर आ रहा है। RCB dugout is very loud today. It's very loud. These guys will do that. These guys will do that. We've seen this. Okay, Banu Bhai is also coming up with a strategy. Okay. This was supposed to happen today. आ रहा है, उसको बोल कितनी जल्दी है। मेरे को लगता है नहीं दिखाना चाहिए कि आप क्राउड कंट्रोल नहीं कर सकते। करेक्ट। I mean, अगर बाहर से whatever the noise is coming, whatever the other team is saying, you are inside the ground. If a batsman or a fielder is saying, then there's a no ball. Correct. If it's inside the field, I don't know what these guys are discussing, because you can say anything outside the field. You can say it any time of the match. It's nothing. No objection. And okay, the umpire has said that don't say anything when the bowler is bowling. पर ये मुझे लगता है कि This इज ऑल कंडीशनल, कि अभी 2 बॉल जा चुके हैं आपके बाउंड्री पे, तो अब आपको हर चीज जो भी लग रही है वो बहुत ओवर द टॉप लग रही है। करेक्ट। तो ऐसे रिएक्ट करना मेरे को लगता है एक साइन ऑफ कंपोजर दिखाना चाहिए ऐसी सिचुएशंस में। आप शोर में चाहिए मैं विकेट लेके जाऊंगा, वो होना चाहिए। करेक्ट। बॉलर आपका मेन है कमबैक बॉल, और ये ब्यूटीफुल कमबैक बॉल, और ये आउट, विकेट, और वो विकेट मिलता हुआ, विकेट आता हुआ। That's a real good beautiful ball, what a comeback, and the whole SRH team is looking towards the RCB team. Look at this, guys. This is called the ASUPL finals. यही होता है ASUPL के फाइनल में। और क्षितिज वापस जाते हुए, और क्या हम देख रहे हैं कौन आ रहे हैं अंदर। दूसरा जो कोलाइड हुआ है उसमें सेकंड वाला इधर जो भी थे जिसका मुंह फूटा था। और and we can see Raghu walking inside the pitch, and Jadimat is again with him. Jadimat is with him? No, Jadimat is not with him. It's Abhishek. Yeah, Abhishek Jadimatta is with him. So beautiful comeback from SRH. This is what the finals is. You need to stay on your toes for all the 120 balls that are to be bowled. I mean, you don't need to drop your heads down. This is what we see from SRH, what we didn't see from RCB, right? These guys, the guys got conceded for runs, they got hit for boundaries, and then we saw the other team lose their shoulders. But now in SRH also, these guys, when the RCB team was, shouting from the other end, these guys cooled the situation down first, and with a calm situation, yeah. Abhijit कौन है? उनका शर्ट नहीं है अभिजीत ही है ये। So just now I got to talk to Abhijit on the boundary line, and he was like, so the reason behind they were stopping and not letting, the reason behind they were stopping the RCB crowd just to not shout, because in the previous game this is what happened it seems. So the SRH team was wanting to, and they were like cheering every ball while the run-up was going on, but then the umpire stopped them and said you can't do this and all. Okay, so what this a might ball. just be a follow-up action that is coming up, which is not wrong. I mean, if I am in the bowling team, and if I am bowling, I mean, in the game when we faced 2 games before this, we faced SRH in the qualifying game, and it was the same thing. I was bowling, and I got hit for a 6 from Abhijit Bhai only, and the crowd was, they were going bollocks. They were all out on me, and personally, I am a player who won't keep quiet on the ground. I mean, the people who know me, they know me how loud I am in the wicket, and how I mean, that's how I play the game. That's how I get my motivation to play the game.
And it's not that I say something bad, it's just that I support the game, I respect the game, I respect each and every player. But they were shouting, they were going all out on me because obviously I sledged a lot. So after that over I took 2 wickets. I took one of Abhijit Bhai and another wicket of another guy, and then I was the only one who was shouting at the other team. So as a bowler, you need to bounce back. Don't say anything before you're doing something well. Say something when you're doing well. That's it. That's a good ball. Now Yashwant is on top of them. First 2 balls, 2 fours, and now look at him. He took a wicket. He took an important wicket. Shitesh, he plays for Vipers, ACC, fellow club member, and he bowled good. Okay, there is some management issues, some mishap between the umpires, miscommunication between the umpires. Shamin said that's not a wide. Manas thought he said it's a wide. And no ball. There was a confusion between the second bounce and calling about the no ball, but then the leg umpire refused calling it a no ball because it was under his shoulder. So good decision. Because the umpires also have a lot of pressure in this game. It's a finals game. Don't want to give a wrong decision which will lead to like a loss of a team. Because an umpire's call can change the game. Definitely. Any call from the umpires. That is what we have been seeing in international games as well. One good call of a good player, then the whole team's going to be collapsed. So yeah, that was a really good call. It just boosts up the bowlers' confidence. Let's see what happens. This is one of their key bowlers also, Dhanush Chandra and DC. They're just going for it. Oh, that was a lovely backup by Abhijit Lovely backup by Abhijit Bhai. That's it. If you look at the field now, everybody is behind. Everybody is encouraging. This is something that the SRH team requires the whole 20 overs. If they're like this for the rest of the overs, I think they're going to be on the winning side for sure. And look at the fielders, if you would. They're very close to the batsman. They don't want to give easy singles right now because they want the batsman to hit aerial shots, because in the fur ball initial overs you can get a lot of catches. That's it. A good shot, straight shot. Great fielding by Harshit Bhai. He's one of the best fielders of their team. It's an amazing fielding effort by Harshit Bhai. He's the only one in yellow today. So everyone on the ground is wearing red, black, and he's the only one who is in yellow today. I asked him what's the reason behind wearing yellow. Initially, he was just joking with me, but then he told me the real reason because they won all the games only when he was wearing yellow color. That's why he said, "Look, I'm not going to change this game, and I want everything to go as smooth as it did in the last 5 games." Correct. The pressure that they came up after the first game, getting all out. यही होता है. क्रिकेट सिर्फ स्किल, माइंडसेट इन सब का गेम नहीं है. क्रिकेट एक सुपरस्टिशियस गेम भी हो जाता है. बिल्कुल. क्योंकि क्रिकेट में बहुत लोगों के सुपरस्टिशंस होते हैं. जैसे ऐसा नहीं है सिर्फ. और ये कैच की अपील for a catch. And it's out. Catch. Manas has raised his finger. What an amazing catch by Bhanu Pratap. An amazing catch. What Bhanu a catch. Diving in front, single hand. That was a lovely catch. Beautiful catch. Just, excellence. Captain. Just to see. That is their captain. If you see your captain doing something like that, giving his 110%, as a player, you would want to give your 110%. Definitely. When I was interviewing him before in the innings break, we were talking in the English. So what he exactly said was, before the game started in the huddle, he said, if we want to die, let's die here. This is going to be the best place to die. And if you see him in the field now, the way he jumped, he never really jumps in the Correct. He never puts that effort. But today he just wants to give his 100%. He's keeping his body on line. He just wants to die here. This is like the impact that he brings onto the game. This is like the perfect example of how a captain should be. He's just throwing himself in the ground. This will bring like encouragement for other fielders as well to throw themselves. Okay, so a big wicket comes in. Yeah, he's Vinit like an important. He's important wicket. He's a very important wicket. If he stays there, and I know for a fact that he won't be, playing dot balls a lot. He doesn't like to play a lot of dot balls. He will go for those shots. He will go for those runs. He would want the initial runs. So for me, if I feel he's the man for the power play. Definitely. He will score. He will try to get those runs in the power play. See that first ball, he went aerial.
And it's a mishap, it's a miscommunication. Nobody called. It was a first ball wicket. It's a drop catch now. This wicket will cost a lot. This will cost a lot. First ball, you got Vinit Puttaraju's wicket and you've dropped the catch. That's what I'm saying. He will go on for the shots from the first ball. He won't play those defensive shots that you see from the other players. He would go for it. This catch drop will cost them a lot, is what I believe, unless there's like a very good ball from the bowlers. But then these type of communications are very important in finals. Correct. Dropping catches is just not worth. Another That was a edge. lovely ball. Looks like they have SRH is showing big intent in them. Look near the pitch. How many players are there? Looks like everybody wants to go on to Vinit Bhai, because definitely he's like a really good player. He can rotate, strike every ball. He can get good runs. He can hit huge. He can get easy runs. He can like play unorthodox shots as well. और जो इंटेंट हम देख रहे हैं SRH की टीम का, वो बॉलिंग जो कर रहे हैं भाई एकदम परफेक्ट लाइन एंड लेंथ, बेहतरीन बॉलिंग, बहुत बेहतरीन. मतलब कोई भी गंदी बॉल नहीं. शॉर्ट बॉल अगर डाली है तो आउटसाइड ऑफ स्टंप की शॉर्ट बॉल डाली जिसको इजीली आप पुल नहीं कर सकते. और शॉर्ट बॉल के लिए वहाँ पे एक डीप स्क्वायर लेग भी रखा हुआ है ताकि अगर शॉर्ट बॉल पे पुल लग जाए तो वो भी आपको वहाँ कैच मिले. और अभी आप देख रहे हैं कि 2 फील्डर बाहर लगाए गए हैं. एक लॉन्ग ऑन लिया गया है बाहर और एक डीप मिड विकेट लिया गया. आई थिंक शॉर्ट बॉल आ सकती है इस ओवर में, क्योंकि एज अ बॉलर मैं इस टाइप की फील्ड तभी रखूँगा जब मुझे शॉर्ट बॉल डालनी हो और जब मैं जानता हूँ कि बैट्समैन स्लॉग करेगा. एंड अभिषेक जो हैं बैट्समैन जो हैं वो पीछे खेलना बहुत पसंद करते हैं. मतलब इनके पिछले मैच में CSK के अगेंस्ट में अंपायरिंग कर रहा था और इन्होंने 3-4 मारे थे पीछे खेल के. ये देखिए, ये भी पीछे खेलने की कोशिश करी थी इन्होंने, अच्छे से टाइम नहीं हुआ. एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द फर. ये जो फर होता है बॉल पे, कॉस्को बॉल पे, ये इनिशियल ओवर्स में बॉल को स्लो करता है. द बॉल बिकम स्लो एंड इट बाउंसेस अ लॉट. तो इसको एज ए ओपनर आपको इसको पुराना करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपके जो बाद में बैट्समैन आएंगे, द बैट्समैन हु कम आफ्टर यू, उनको ईजी रहे और उनको क्या है पुरानी बॉल मिले. ये अच्छी लीव करी यहाँ पे. विकेट के काफ़ी क्लोज थी लीव, बट अच्छी लीव. यानी बैट्समैन टाइम ले रहे हैं आज अपना. फाइनल्स हैं, 20 ओवर्स का गेम है, रन अ बॉल सिचुएशन है. यू डोंट वांट टू रिस्क एनीथिंग. एज भरत योगेश सेड कि the initial batsman, whoever goes first, take their time, play 10-20 balls and then start striking the ball. Whatever the captain said is right. Because as you said, the fur over the ball, it is going to be a major role. It's going to play a very major role in games like these. Especially it's like very cold now. Short balls पे cut मारना point के ऊपर से, these are shots that like come only when your body is heated, you're ready to get those shots. But ये ठंडा, ये the weather it's right now. और ये pull shot, बढ़िया शॉट है. 4 runs, beautiful pull shot. That's what I'm saying कि फील्ड लगाई थी शॉर्ट बॉल के लिए, बट वो जो डीप मिड विकेट है उसको काउ कॉर्नर की तरफ पुश कर दिया. I mean, if you're bowling a short ball, take a deep square leg rather than taking a deep mid wicket, because the ball has fur. बॉल लेट जाएगी, बैट्समैन के पास टाइम होएगा और वो पीछे आराम से खेल सकते हैं बॉल को. तो जितना पीछे रख सकते हो उतना पीछे रखो. नया बॉल होएगा तो समझ में आता है कि वो आगे मार देगा, मतलब पुराना बॉल होगा तो आगे मार देगा. बट अभी पीछे जाने वाले हैं काफ़ी शॉट्स. कम बैक बॉल और फिर से ये देखिए, गुड इंटेंशन. आई मीन, आई वॉन्ट टू सी दिस. ये कॉम्पिटिशन मुझे चाहिए इन द पावर प्ले. मुझे ये देखने में मज़ा आना चाहिए कि भाई हाँ, बैट्समैन को पावर प्ले में बहुत रन स्क्वीज करने पड़ेंगे. बिल्कुल. अगर आप नहीं करते वो तो फिर बाद में जो बैट्समैन आएंगे, जब फील्ड स्प्रेड हो जाएगा तो नए बैट्समैन आएंगे, दे विल रिक्वायर देयर ओन टाइम एंड गेम डिफिकल्ट हो जाता है वहाँ. बिल्कुल. कीपर इशारा, गुड शॉट, गुड यॉर्कर, लेंथ बॉल एंड नॉट अ कैच. गुड अटेम्प्ट. देखिए वहाँ ट्रेविस हेड होते हैं ना तो जरूर पकड़ लेते हैं ये पर ट्रेविस हेड है नहीं अभी यहाँ पे, तो catch. But then if you go back to the final, his catch was like the main catch. I feel that's that like one of the difficult catches. I feel that catch changed the whole match, because before that catch, I mean Virat Kohli was also looking comfortable at the wicket. Both of them were playing as if it's a batting track. And after Rohit's wicket and the quick wicket of Shreyas Iyer, the wicket seemed to be slow, or I don't know what happened. The players, either they felt pressurized or Indian players got in pressure, because when Australians came up for batting, these guys were playing like it's a batting track, it's not a bowling track. Because the dew was the dew factor also came in. I understand that, but
you know, when Rohit was playing and Virat were playing, they were scoring at 150 strike rate. So, I mean, that game has gone, that game is past. So, let's focus on this game. So, 3 overs, after 3 overs, it's 15 for 2. And Abhishek Jadimatta is on 6 of 7 deliveries. And Vineet Puttaraju is on 0. So, he hasn't gotten off the strike. He's played 3 balls. He got an opportunity on the first ball. So, he got an opportunity. let's see what he can... He should utilize it now. I mean, if you get dropped, you should utilize that wicket. Good. Oh, that was a lovely ball. It's a wide signal by the umpire. So, I have a serious doubt. If the ball pitches and then rises above the batsman, like after the ball left the batsman, so when the keeper is collecting, it's the first shoulder that's seen. It's the first shoulder that you're facing the bowler. That shoulder. If it's a lefty batsman, it's his right shoulder. If it's a righty batsman, it's his left shoulder. So, in this if ball, it's above that, if it's above his head, the wide is only when it's above. Oh, big shot up in the air, and up that's in a the six. air towards the trophy, and a drop catch by Jai Patel. Jai Patel showing his form. That was a lovely shot. That was Jai out of the Patel ground. कैच तो पकड़ते ही नहीं है. जय पटेल ने ठान रखी है. हमारी ही टीम के LSG के ही प्लेयर हैं जय पटेल, और इनको हमने कैच पकड़ते हुए देखा नहीं है पिछले 2-3 सीजन से. तो कोई बात नहीं, उनके शायद हाथ में थोड़े जख्मी भी हुए हैं, चोटिल हुए हैं जय भाई, पर कोई बात नहीं. जय भाई ठीक तो चलो. थम्स अप का इशारा आ गया जय भाई से. और ये क्या शॉट था, शॉट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो जो फ्लो है ना बैट का, वो बॉल डालते ही प्रीमेडिटेटेड नहीं, जो बॉल को देख के मारना. इस टाइप के शॉट्स हम वैसे प्रजीत भाई से बहुत देखते हैं. वो इस टाइप की ही इनिंग्स खेलते हैं. आई मीन आई हैव नेवर सीन हिम प्ले दैट टुक इनिंग्स. If it's meant to be hit, he would make sure that the ball is out of the park. And मैं यही बोल रहा था, Abhishek would go for the balls. He would be aggressive from the start, and this is what you need to do. This is how you have to be. Because in the power play you need those runs. Yeah, power play में if you can get like 45-50 Correct. runs, उसके बाद game equation ही बहुत simple दिख जाता है. Correct. Because once you because get like after those 6 overs, after those 6 overs until the 15 overs, like after that the 9 overs, the you game won't. gets slow. Yeah, the game gets slow. You won't get that many runs. You will be just getting 4 or 5 of each over. Just a boundary in one. Oh, yeah, beautiful shot, man. What a shot. That's amazing. That's an amazing uppercut. What a shot. And that's an uppercut that went toward extra covers. So that's what I'm talking. I mean, the ball is staying so slow, that is uppercut that was meant to be, going towards deep backwards point is on extra covers, because the ball is coming slow, the pitch is doing its thing. And that's it. That was too short for me. Too short, yes. I mean, you're bowling like 6 or 5 short balls in an over. You need to bowl it up. You need to pitch it up so that the batsman, does some mistake. Yeah. The shots that he's playing, if he's getting time, if he is able to see the ball, he can hit easily. Correct. So keeping the ball on good length is something that you just go in front and just play it, because you don't want to like go up. See, look, these kinds of ball, it's not too short nor too in front. So these kinds of ball are just like placed, just want to like get going with 1-2 runs, just want to like get those immediate singles, is something that is very important. That was a lovely shot. So that is what I've been saying. You bowl too short for him, he's going to get time and he's going to pull it off. So the best way to make the batsman play is ball him short of good and good length, where he won't be able to hit big. And in the bowlers like this, who are like the main bowlers of SRH, should not concede runs like this. It's already like 15 runs in this over with a wide on the first ball. So let's see what happens, because this is like a very, very costly over. On the other end, the player wants to like, he's trying to restrict runs. Yash Bhai is trying to restrict runs. Oh, this is the ball that we are expecting to be. So we're here, guys, after the first 4 overs, 30 for 2. That's what I like to see. I mean, as an opening batsman, I want to get those runs in the initial over of the power plays. Because
I feel the opener sets the tone for the rest of the innings. And when you are chasing, even if you're going first batting, both of us, we're those kind of players who, don't think a lot about the game. We want to play our innings. We don't care what the pitch is like. We just play the way we are as a player. So I think Abhishek bhai, what he's doing is amazing for his team, because you lost 2 wickets and he's still hitting the balls. He's not playing like those dot balls or leaving. Not in pressure. He left a few balls. He was leaving a few balls. He was at 7 of the first 9 balls. But look at him now. He's on 20 of 13 balls, closing about to 200 strike rate, and he's playing amazing. So off spinner brought into the attack. It should be a wide over his head. Off spinner. Yeah. The pitch is playing itself, so the only thing that somebody can do is like. And you see Abhijit bhai come into the power play as a bowler. He's a very good off spinner. Short ball again. And it's not easy to play a short ball off the spinner because it's spinning and it's coming towards you. He's an off spinner. It's quick as well. Yeah, he's quick as well. And if you see Khushwant Rana, he's also not a bowler, easy bowler to play because he's quick. He gets the spin and the ball comes to your body. It's not easy to play those balls. Good shot by Vineet bhai, but still in the hands of the fielder, and he's still at 0. He's still not gotten off the mark. I like the field placement. Yeah. Even though he's bowling short, he just has like the short square leg, because it's just directly going into his hands. So he's well prepared of what to do. He knows, the bowler knows where to bowl and what field he needs. This is some. But see, he has a short square leg. But he has a fielder that plays between deep mid wicket and deep square leg. Yeah, which he can. Which cover, is a sweeper. So yeah, which can cover both those places. So he's quick as well. Yeah, he has a deep mid wicket. He has a mid wicket, short mid wicket. He has a player between the deep square leg and deep mid wicket, and he has a long one. That's a beautiful lead placement. And still not off the mark. Now that's pressure. That's pressure. This is some pressure will be building up on Vineet bhai's sleeves, because he's not a player who would play those many dot balls, as I've said again. True. I think after the first ball catch drop, he's trying to like do things. He's trying to be cautious about his wicket, but then this is not what his role is. Yeah, his role is, and RCB requires at this point. They just want to go after it because they have like a good batting lineup until the end, and then he has to make sure he gets good amount of runs. Look, he's going for it. That is what pressure is outside off stump on the fourth. Just the reason why he missed that ball is his head was not stable. You could see that his head was on the long on and deep mid wicket, and the ball was outside the off stump. So that's what I was about to say. The ball was on the fourth stump and he's trying to slog it. And then there's also that's a pressure shot. That's a big pressure shot. He's trying to like shuffle and do things, which is different. But this is not what he exactly does. He wants to like play on the top of the ball. And just 2 runs from this over, and that too only of wides. This is some kind of bowling. This is experience as well. Getting an off spinner when there are only 2 spinners outside, usually it is like a big thing for a bowler. It takes great difficulties for a bowler. And to be honest, SRH's team, they have a lot of experienced players, and by experience I don't mean the number of matches, I mean by their age. They have a lot of elderly players, like Banu bhai is there, Abhijit bhai is 28, and you get that composure after a particular age as well. So that is the composure, that is the resilience that these guys have, because they've seen a lot. They've lived they've almost lived 30 years of their life, and that is experience. They're like 10 years elder than other players. So the experience that comes from age is also a very important experience. So we're seeing that from SRH's team, and I guess they're calling Venkata Sai Lokesh. That's the new bowler that's coming into the attack. So and a new bowler into the attack. So Lokesh, talking about Lokesh bowling, he's really good when he comes. He's not too quick, not too slow. He's perfect with his length. He's perfect with his length. He tries making it look simple. He plays for NPCC Titans as well. Okay. 40s, and I've seen him bowl a couple of times. And his ideology is just to like bowl good, just slow,
good, well enough. Just like reads the batsman slowly. He'll just go on to the other end. He'll make the batsman go for it because it's even tempting. Like when you and me play, when it's like a slower delivery, when you know the bowler is slow, the only thing that we want to do is like shuffle and hit it outside. Yeah, the ground correct. because we have that power, and every player believes that they have the power to hit outside. Correct. And we have seen. Oh, what a shot, man! What a shot! What was that? इसको हम थप्पड़ शॉट बोलते थे. थप्पड़ शॉट बोलते हैं. I mean, what a shot, yaar. Like that was like way above. He could have He get a wide jumped. ball, He but jumped and hit it. I mean, yeah, he could have gotten a wide ball and also an extra ball, but he took a single on it. Yeah. This is some kind of real pressure. 59 है. 59 है तो करना है तो कर लो. इसमें कर ले भाई. 95 है. जल्दी कर इसमें. मेरा बंद हो जाएगा. कमेंट्री नहीं कर रहा. कर रहा हूँ. वही तो कर रही. अच्छा इधर ही करना. हाँ. शॉर्ट बॉल एंड इट्स सिलेक्ट. व्हाट अ कैच बाय भानु प्रताप नायोदरी. एक और शानदार कैच भानु प्रताप से. क्या डाइविंग एफर्ट्स मार रहे हैं भानु भाई आज. मतलब ये जो बंदा है ये आज अपना 100% नहीं 110% नहीं 200% देने आया है इस पिच पे. He rather prefers to die. That is what he said. करेक्ट. जो उनकी थॉट है आज के मैच में, मैंने उनको कभी नहीं देखा इतनी डाइव मारते हुए, पर आज 2 डाइविंग कैचेस लिए हैं भानु भाई ने. और बैटिंग क्या करी है, तो कैप्टन, पूरा प्योर कैप्टन परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस मैच में. अपनी टीम को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं. ही इज लाइक उनका जो सबसे मोटी ईंट है वो इस टीम की, और वो अपनी टीम को बांध के चल रहे हैं आपस में. और जो हिसाब से विनीत भाई अभी आउट हुए हैं, मतलब प्रेशर शॉट था. You can see the pressure like on him because he got like 9-10 balls and no runs. 9-10 dot balls continuously, and then you can see the pressure shot that is coming, that came up, which eventually lead. भाई मेरी प्रोफाइल मुझे बहुत प्यारी. वेलकम बैक गाइस. वेलकम दी बैक गाइस. और मेरे साथ मेरे पिछले सीजन के समर्थक जो कि कमेंट्री बॉक्स में मेरा पूरा साथ दिया गया था, आरव कपूर शामिल है कमेंट्री बॉक्स में. आई थिंक कि लाइव स्ट्रीमिंग की जो चैट है अभी भरने वाली है कि आरव कपूर वापस गए हैं. आरव क्या कहना चाहेंगे मैच के बारे में? देखिए मैच बहुत क्लोज है और मेरे को यहाँ लगता है कि एक और विकेट और SRH का ही गेम हो सकता है. और क्या शॉट तो नहीं रहा, लेकिन एक छक्का पूरा है. भरत योगेश वाला शॉट था, आते ही इंटेंशन दिखाई. भारत ने पर शॉट मारा. व्हाट अ शॉट. एंड भरत गोज बिग. भरत भाई ने ये दिखाया कि वी आर नॉट हियर टू प्ले डिफेंसिव. आई विल फ्रॉम बॉल 1, यू नो, डिफेंसिव टू शो माय इंटेंशन. आई एम हियर टू विन दिस गेम. इंटेंशन दिखाई और कोई नीचे बैठ गया है वहाँ पे, शायद बांध रहे हैं, प्लेसेस आ रहा है वहाँ पे, कंफर्टेबल कर रहा है. क्या ये स्ट्रेटजी है आदि जी? ये स्ट्रेटजी तो अपने उधर भी देखी थी लोग ने, जब अभी आप आए भी हैं, पर इन्होंने फर्स्ट ओवर में देख यशवंत भाई गॉट हिट फॉर 2 बाउंड्रीज इन द फर्स्ट 2 balls. और उसके बाद आरसीबी डगआउट से लॉट ऑफ नॉइज कमिंग एंड भाई यशवंत द गेम. दे आस्क्ड द अंपायर टू टेल द अदर टीम टू नॉट से व्हेन द बॉलर इज बॉलिंग. और उसी के बाद उसी बॉल पे विकेट आया. तो ये स्ट्रैटेजी है. हाँ, ये कैप्टनसी इतनी शानदार है कि वो गेम जैसे उनको लगता है कि फास्ट हो रही है, बैटिंग को स्लो कर देते हैं. तो ये बहुत ही शानदार वो है. तो ये ओवर बहुत होगा देखने वाला, बिकॉज अभिजीत इज नोन टू गेट्स अप. करेक्ट. अपनी फ्लाइट में अटका देते हैं बैट्समैन को. ओह व्हाट अ. अभी देखो, अभी प्लेसमेंट देखो, ओवर प्ले हो गया. या द प्ले at the field, everybody is back. The there's a square leg, deep mid wicket, long on, long off, and sweeper as well. You see this field. Field has opened an off spinner, so now he has to ball wherever he wants. He knows he can like stop games. He has a good field placement. He doesn't have a short square leg right now, but then he's good. Real tech. So what a noise from that car or bike. That was a bike probably. Oh, big. This is what Abhijit is good for. वो ऐसे ही फ्लाइट देते हैं. ऐसे ही इन्होंने पूरा सीजन विकेट पिकअप किया है. He's just trying to like the batsmen go for it. And if you see like, all the final games and all the pressure games, this is when that was a close call. Run out chance. Good backup from the SRH team. That's what we've been seeing. SRH की टीम एज अ यूनिट खेल रही है. इन्होंने हमने CS वाले गेम में भी देखा था कि अभिजीत फ्लाइट में ईशान झा और अमोक देसाई दोनों को ट्रैप में फंसा कर कैच आउट किया था.
and I think his 4 overs are going to be और mean. अभिषेक ऐसा प्लेयर है कि वो रुकेंगे नहीं, वो जाएंगे ही शॉट्स के लिए। ये देखिए शॉट, और क्या शॉट मारा है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया शॉट मारा है। 4 रन जड़ दिया है, एक और चौका, एक और शानदार चौका डीप एक्स्ट्रास कवर की तरफ मारा है, और ये बहुत बढ़िया शॉट थी और एकदम ग्राउंडेड शॉट मारा कि कैच नहीं पकड़ सके कोई उनका। क्या हम इनको जड़ी मारने की जगह जड़ चौका बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। जिस तरीके से इन्होंने जड़ा है चौका, इनका नाम जड़ी मत से जड़ चौका कर देते हैं। शानदार शानदार। If you look at the field right now, there's a short catching covers, so I don't think it is अच्छा right at लीड this किया, point दिस इज because, ये है अभिजीत की विकेट टेकिंग बॉल, और बहुत अच्छा छोड़ा गया है इसको। बिल्कुल। क्योंकि वो जानते हैं कि उनका विकेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बैट्समैन कम होने की आज आरसीबी की टीम में हुआ है। क्योंकि और ये शॉट पीछे, मैंने आपको बोला था ये पीछे बहुत शॉट मारते हैं, और वही किया गया है। इनके लिए एक शॉर्ट लेग अगर रखा जाए, शॉर्ट लेग कह रहा हूँ, शॉर्ट फाइन लेग रखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ कैच भी चल सकते हैं इनके। ये वो पल्लू शॉट है, ये सब टाइप के शॉट्स मारते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं अपनी बैटिंग के साथ। सुपला शॉट जैसे अब हमारे विहान फाल जो है वो इस शॉट को इतना माहिर कर चुके हैं कि वो वहीं खेलते हैं, पर उनके लिए अगर आप वहीं फील्डर लगा दीजिए तो वो वहाँ कभी शॉट नहीं खेलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, करेक्ट, आपको पता होना चाहिए कि कौन बैट्समैन कहाँ खेल रहा है, उस हिसाब से आपको अपनी फील्ड को ऑल्टर करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा जी। One change in the field, I think the catching covers is like not worth at this point because they're not getting enough runs. If the previous ball when it went for a boundary, if the fielder was like about 20-25 yards from the line, then it would have been a catch as well. So these are the things that the captain has to take into consideration. At this point, it's really not worth giving those fours. Singles are fine, they can like stop, but the boundaries can cause. That is what happened in the first innings as well. The RCB team was really good, but then eventually they got 16 runs continuously in like 3 overs, then that is where the momentum changed to SRH, and then definitely we can't forget the innings of the captain Manubai, the way he played, the shots that he was trying to hit, it was really good. एंड जैसा कि हम देख सकते हैं कि 7 ओवर की समाप्ति में 47 रन हो चुके हैं। अभी लास्ट बॉल पे सिंगल आया था, स्क्रीन पे दिखा होगा वो, पर आखिरी बॉल पे जो था वो सिंगल आया था एक, और स्कोर अपडेट हो गया है 47 for 3 होना चाहिए, 46 अभी क्यों दिखा रहा है पता नहीं मुझे। और ये दोनों और 5-6 ओवर तक और खेल जाएंगे तो मैच इज वेरी मच ओपन। योगेश जो है वो कोशिश करेंगे कि वो पूरी इनिंग्स रहे, कैप्टन नॉट सिचुएशन में, और जाड़ी मत्ता जैसे खेल रहे हैं उनको वैसे ही खेलना चाहिए। ये अच्छा बॉल और अच्छा डिफेंस पीछे हल्के हाथों से खेला गया ताकि कैच ना उछाले, जो कि विनीत पुट्टराजू की हमने बैटिंग में देखा था कि ऑन हिज फर्स्ट बॉल ओनली, जस्ट बिकॉज ऑफ दोस हार्ड हैंड्स ही जस्ट पॉप्ड द कैच टुवर्ड्स शॉर्ट थर्ड मैन, बट वो कैच छूट गया, बट स्टिल दीस गाइज गॉट हिज विकेट and a slower one, and बहुत अच्छी बॉल, very beautiful ball, बहुत अच्छी बॉल। लेकिन this is what I've been saying about Lokesh bhai. I've been just saying he doesn't want a ball too quick nor too slow. He just wants the ball to be on the right spot and make the batsman go for it. See, जैसे हमने इस सीजन पिचेस देखी हैं, he's not bowling that fast. जैसे हमने इस सीजन पिचेस देखी हैं, तो मतलब स्पीड इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट अगर हम सही लाइन लेंथ, सही टिप्पे पे बॉल डालते रहेंगे तो डॉट बॉल्स आर मोर। ये आप गलत प्लेयर के सामने कह रहे हैं, हम तो देखिए हम उनमें विश्वास रखने वाले हैं कि रफ्तार होनी चाहिए। आप हैं भी तो हरियाणा से, लेकिन रफ्तार होनी चाहिए गेंद में कि इतनी तेज गेंद डालो कि, और ये वाइड ही दे दी है वाइड बॉल। देखिए रफ्तार एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इतनी तेज डालने की सोचें कि बिफोर द बैट्समैन टेक्स हिज बैट, वो बॉल जानी चाहिए और विकेट आ जानी चाहिए। इसलिए अगर आप देखें मेरी कैच आउट जितनी नहीं होती जितनी कॉट बिहाइंड्स और बोल्ड आते हैं, तो आई पर्सनली फील कि मेरी स्ट्रैटेजी अलग रहती है, बट हाँ हर प्लेयर की स्ट्रैटेजी अपनी होती है, एंड आई नो कि काफ़ी प्लेयर इतने रेगुलर नहीं खेलते हैं, तो वो क्विकनेस और वो एक तेज रफ्तार नहीं है। जो लोग अपनी पेस पे कंट्रोल कर सकते हैं हाँ वो तो करेक्ट पेस डालें, बट जैसे लास्ट गेम में हमने सीएसके वाले गेम में देखा था, ईशान झा और दोनों साई संदीप दोनों पेस के लिए जा रहे थे एंड बहुत सारे एक्स्ट्रास दिए गए थे। करेक्ट। तो उससे बेटर तो वो है कि आप सही लाइन पे पकड़े एंड एक्स्ट्रास कट करें। करेक्ट। और ये अच्छी लाइन एंड लेंथ जो कि प्रजित बोल रहे थे कि बहुत एंड अ ब्यूटीफुल शॉट, बहुत ही प्यारा शॉट, यही बात कर रहा था मैं, इसी शॉट के बारे में बात कर रहा था कि आपको इस प्लेयर के लिए पीछे रखना पड़ेगा फील्डर,
क्योंकि ये जाएंगे, ये सुपला मारेंगे, सुपला सिटी पे जाएंगे। ये वापस से अभिषेक जड़ चौका ने जड़ दिया है एक शानदार चौका। भानु भाई के ऊपर से निकाला है ये चौका और ये थोड़ा अभी रोमांचक हो रहा है मुकाबला, क्योंकि अभी 50 ऊपर हो गए हैं और ओवर सिर्फ 8वां का हुआ है। अभी 8वें ओवर की भी आखिरी गेंद बची है, तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन में है। नहीं, बहुत ही अच्छी सिचुएशन में, क्योंकि अगर 10 ओवर में ये लोग 70 तक पहुंच जाएं या 60 तक पहुंच जाएं, आधे बन गए हैं आपके रन। बट आदि इनको यहाँ खेलना पड़ेगा पूरे ओवर। ये देखिए, ये बेहतरीन कमबैक, बेहतरीन कमबैक। अंदर कटती भी दिखी मुझे बॉल यहाँ पे। थोड़ा गुस्से में है लोकेश जी, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका अच्छा ओवर फाइनल के टाइम नहीं, आपने एक अच्छा ओवर डाला था, 4 बॉलें आपने बहुत अच्छी डाली एंड देन गेटिंग हिट फॉर अ 4 एंड वो भी पीछे से अपनी 5th बॉल पे, तो वो एक थोड़ा होता है। आपको लगता है कि यार कि मैंने पूरा ओवर अच्छा डाला, बट इन दी एंड आई मेस्ड अप, तो वो थोड़ा लगा आज। बट यही है, कंपोजर रखना पड़ेगा एसआरएच की टीम को और एंड तक फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे हिसाब से फाइनल्स है और ये लास्ट बॉल तक जाने वाला मैच है। पिछले सीजन भी फाइनल्स लास्ट बॉल तक गया था और फाइनल वाला मैच लास्ट बॉल तक ना जाए ना तो फाइनल जैसा नहीं लगता। वन साइडेड मैच में मजा आता नहीं है वैसे भी। The RCB has like a really good chance of winning right now. Getting 17-13 overs is easy, but then remember the captain also has like 4 more overs. Banu Bhai has 4 overs. He's a brilliant bowler. And Abhijit Bhai is also bowling now. बेहतरीन गेंद अभिजीत द्वारा। देखिए प्रजीत भाई जो भी कह रहे हैं, व्हाट इज ट्राइंग टू से, जो भानु भाई हैं आपको हमेशा विकेट कीपिंग करते हुए ज़्यादातर दिखेंगे, बट जब टीम रिक्वायरमेंट होती है वो बंदा अपने विकेट कीपिंग के लिए छोड़ता है और बॉलिंग करने आता है एंड ही ऑलवेज डिलीवर्स एंड अ बिग शॉट स्ट्रेट इन द हैंड्स ऑफ हर्षित एंड मिस फील्ड्स इट एंड इजी सिंगल। और भानु भाई का क्या है, वो 10 ओवर के बाद आएंगे, अपने 3-4 ओवर वो फेंकेंगे, बट ही विल बोल इन द वेरी क्रूशियल स्टेज। और उनकी बॉलिंग इतनी परफेक्ट है ना, मतलब उनको मारना आसान नहीं है। वो एक्स्ट्राज नहीं देते, वो ऑफ स्टंप पे डालते जाएंगे। और ये शानदार शॉट एक्स्ट्रा कवर की तरफ से चौका, एक और चौका, और ये अभिषेक जड़ीमत्ता ने जड़ी चौका जड़ दिया है, एक और चौका। शानदार 4 रन। आरसीबी का डगआउट एकदम बुड़बुड़ाता हुआ है, एकदम जोश में है ये लड़के आज। क्या लगता है कौन सी टीम कर दिखाएगी? अभी हार दी। अभिजीत अभी पिटते हुए थोड़ा सा, अभिजीत पे अभिषेक चौके मार दिए। बैटल ऑफ अभीज, अभी का अभी गेम चल रहा है। अभी क्या होगा? वही होगा जो अभी करेंगे। कौन से वाले? से तो अभी जीत होगी। अभी जीत होगी। डागर जी का प्रेडिक्शन है कि अभी जीत होने वाली है। देखिए 34 बॉल और ये कमेंट्री बॉक्स से आवाज उत्साहित हो गए हैं। विचलित मन के हमारे प्लेयर अमोक डागर उत्साहित हो गए हैं। दिख रहा है, वो माना जाता है कि मतलब वो पहला सीजन कैप्टनसी थे एंड पर्सनली मैं उनके कैप्टनसी के कभी अंडर खेल, इट इज अ एक्सपीरियंस। हाँ, बट मैंने उनको जितना देखा है एज अ प्लेयर, जो है मैं उनको जानता हूँ, उनके अगेंस्ट जो मैचेस खेले हैं, जेन्युइन दैट मैन। और उनकी जो गेम नॉलेज है, जो गेम सेंस है, जो कंपोजर वो रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एसआरएच की इस टीम के लिए, क्योंकि वो अभिजीत भाई और हर्षित भाई, ये 3 बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं इनकी टीम के। देखिए बढ़िया एक ही रन। देखिए एक रन जो है ना, उनको भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अगले 7-8 ओवर में, क्योंकि वो जो है वो प्रेशर रिलीज होता रहेगा बैट्समैन का। और अब बैट्समैन जो है वो चाहेंगे कि उनके रन आ गए हैं। 9 ओवर में 60 रन है। अच्छा 9 ओवर में 60 रन, आई थिंक बहुत अच्छा स्कोर है। और ये देखिए जो मैंने बोला था, भानु प्रताप नयोदरी आ गए हैं बॉलिंग करने, जब टीम को सबसे ज्यादा 9 ओवर्स 58 फॉर 3 विकेट्स। और अमोक जी यहाँ से पूरा समर्थन देते हुए इनको फुल सपोर्ट। अमोक जी के बारे में भी हम बात करें। केकेआर को पहली विन दिलाई है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि और बहुत ही ऊंचा गगन चुम्बी छक्का, भारत ने छक्का मारा, शानदार छक्का। वॉलीबॉल कोर्ट से भी बाहर गई है ये बॉल। ब्यूटीफुल शॉट जो फायरिंग पे रेट कर सकते हैं। ये मानस भाई ने झचक की बैटिंग पे झचक छक्के खाए थे बहुत ही। 4-4 वो भी 4-4 वो भी वॉलीबॉल कोर्ट से। मानस बोले ये तो मेरे वाला है, ये तो मेरे वाला है। मानस भाई बहुत बढ़िया शॉट भरत भाई। और ये बेहतरीन कमबैक, ब्यूटीफुल बॉलिंग, ब्यूटीफुल लाइन एंड लेंथ। पिछली उन्होंने ये गल नहीं करी थी, राइट टू द
the और same थोड़ा हो गया, bit shorter. मानस ललवानी ट्रीटमेंट मिला. Yes, and it was a little bit on the leg side, तो वही बॉल को वो मार पाया आसानी से. ये तीसरी बॉल अच्छी बॉल, वाइड का इशारा कर दिया गया है अंपायर द्वारा, एंड परहैप्स आई फेल्ट दैट इट वाजंट अ वाइड, क्योंकि बैट्समैन भी थोड़ा मूव किए थे. हमारा एंगल थोड़ा टेढ़ा है, अंपायर को बेटर दिखेगा. मानस जी अंपायरिंग कर रहे हैं, चश्मा पहनते हैं वो भी. और ये बॉल कहाँ से निकल गई? एक और वाइड, और ये शायद फर्स्ट बाउंस का भी इशारा होगा, क्योंकि शामिन के लिए तो होगा. नहीं, फर्स्ट बाउंस का इशारा नहीं किया है, कि लेग साइड की ही वाइड दी गई है. एंड इट्स ऑल हैपनिंग इन दिस फाइनल. बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन में पहुंच गए, रोमांचक मुकाबला. और ये शॉट एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ, सॉरी, डीसी फील्डिंग कर गया, एक्स्ट्रा कवर्स दौड़ लगाई, stopped it beautifully, and he Vihan Fall. And Vihan, if you are watching, I'm sorry. This is a respect tribute to you. Make it to the there's some shirt and a beautiful ball. Beautiful, बहुत अच्छा. भाई अभी वैसे यूटा कहीं घूमने गए, सेडोना गए हैं शायद आज विहान भाई, मेरी उनसे बात हुई थी. सेडोना घूमने गए हैं विहान भाई, तो आई होप वो देख रहे हो ये मैच. पर फाइनल की यात्रा के बाद सेडोना की यात्रा कर रहे हैं. अब भानु भाई के ओवर में देखिए आरव जी 10 रन आ चुके हैं ऑलरेडी, बॉल्स हुई हैं 4. क्या लगता है क्या सिचुएशन रहेगी? मेरे कटर वाटर मारेंगे, क्या करेंगे अभी? ये शॉर्ट बॉल और ये वाइड का इशारा. अभी ये आई थिंक बाउंसर या दूसरी है, कौन सी बाउंसर? पहली बाउंसर का इशारा दिया गया है, पहली बाउंसर का इशारा दिया गया अभी. थोड़ा प्रेशर आता दिख रहा है हमें, लेकिन भानु भाई प्रेशर नहीं लेते हैं. देखिए ले लिया है थोड़ा प्रेशर, ले लिया है प्रेशर. भानु भाई प्रेशर लेते हुए दिख रहे हैं. और एज कैप्टन यू डोंट वांट टू सी योर कैप्टन, एज अ टीम प्लेयर यू डोंट वांट टू सी अंडर प्रेशर. बेहतरीन शॉट, एक ही रन होगा. सेफेस्ट फील्डर आई वुड से अर्षित नीला. मैंने इनको ड्रॉप करते हुए नहीं देखा है कभी. हमारे पॉड में भी बहुत हेल्प करते. तो यहाँ पर इनिंग लास्ट बॉल एसआरएच का आउट बोल रहा है आरसीबी का. लास्ट अच्छा है, थोड़ा बीटी हो गया है. और यहाँ पर एक बॉल रहता है, ऐसा आरसीबी का डगआउट बोल रहा है. और एक बचा ही है, एक बॉल आखिरी बचा है, फिर हमारा इनिंग ब्रेक. देखिए 2 बॉलें और एक डॉट आई, तो यानी जाहिर सी बात है एक बॉल बची होगी वापस. और मतलब ये करेक्ट समय पे ब्रेक आएगा. If I'm to say something, SRH point of view से कि करेक्ट समय पे ब्रेक आएगा. पर आरसीबी अभी ब्रेक लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अच्छा चल रहा है. क्योंकि एसआरएच ये देखिए, ये बॉडी पे लगी है. एसआरएच चाहेंगे थोड़ा गेम का इंटेंसिटी स्लो डाउन हो जाए. करेक्ट, और वही इंटेंशन रहेगी. अभी चलते हैं हम लोग, और समाप्ति 10 ओवर की नहीं जानना. और हम यही है. तू बात कर जा, तू और आरव बात करो. तेरे लिए और नीचे करूं. स्वागत है दोस्तों आपका मिड मैच में. तो हम जैसा 121 का टारगेट यहाँ पे एसआरएच आरसीबी में अगले 10 में सिर्फ 51 रन चाहिए. यानी पर नीड 5 1 बाउंड सिंगल, इट्स ऑल दे नीड. और ये सिंगल से भी रन आ सकते हैं. तो आरसीबी आई वुड से बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में, देयर एट अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, एंड दे आल्सो हैव विकेट्स इन देयर हैंड. देयर एट 7 for 3 overs. They have wickets in their hands, and they have an amazing big Danish bhai, and he is second in the MVP list. He's been in this, and Prithvi Raj is also there, and also I would say Arav is also there. Prakhar Jain also batting there. है, big man. So would you like to से अभी बहुत कंट्रोल में लग रहा है. अभी 4 से 5 ओवर और इन दोनों को ही बैटिंग करना है. अगर विकेट गिरता है थोड़ा प्रेशर आ जाएगा. करेक्ट भाई एंड अभिषेक भाई, दे आर लुकिंग फिनोमिनल. बहुत सेट लग रहे हैं वो दोनों. प्ले चल रहा है. अगर एक चौका तो
ट्रिपल डबल कन्वर्ट करके खेल रहे हैं। तो अच्छा अभी 4-5 ओवर खेल रहे हैं, इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ। एक ही वर्ड आता है अभी phenomenal। तनिष जी जो जी के बॉलर उनको बुलाना चाहेंगे हम। वन लेगेड मिश्रा का वन लेगेड मिश्रा। तनिष भाई व्हाट वुड यू लाइक टू से, मतलब कि पर्सनली कैसा इंटरव्यू, मतलब कैसा टूर्नामेंट आपका जो पहला सीजन केकेआर में थे, ज्यादा मैचेस नहीं मिले, तो अभी हम मैच से थोड़ा हट के थोड़ी ऐसी बातें करते हैं। तो आप बताइए आपका टूर्नामेंट कैसा रहा इस बारी, मतलब पिछली बार आप केकेआर से खेले कैसा रहा? मैच मिला के ठीक है। 15 नहीं, हम लोग 9 खेले। कितने हैं? हाँ जी, 15 मैच खेला। अच्छा अपन भी जाते हैं। 2 सीजन में 5 2 सीजन में 15 मैच। देखा जाए में 5 हाँ के क्या टोटली 4 मैच थे। करेक्ट। तो ओवरऑल आप कैसी रही है इस सीजन? बेटर था पिछले सीजन से, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट थी एज ए टीम। और मतलब आप खेल रहे थे वेद भाई की कैप्टनसी के अंडर, तो आप वेद भाई के बारे में एज कैप्टन, जो पुराने आपके कैप्टन थे केकेआर के और जो नए कैप्टन आपको मिले, उसके बारे में मैनेजमेंट पूरी नई में आप गए, किसी के पहले नहीं खेले हुए थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। फैमिली था तो मैनेजमेंट से फर्क पड़ता है नहीं, अच्छा ही था सारा। रहते डालो तो बैटिंग थोड़ा एक्सप्लिसिट हो गए हमारे मिश्रा जी यहाँ पे। नहीं एमआई के कैप्टन आज केकेआर कैप्टन लाएंगे हम। केकेआर तो हो गए, एमआई कैप्टन आओ कब वो यार। आइए हमारे आपको आईपैड कितने का पड़ा? अगले सीजन आखिरी सीजन होगा, ऐसा फील कर रहे हैं आप? अच्छा आपकी एएसएल की जर्नी अगला सीजन खत्म नहीं, सीजन छोड़िए, अभी ये बात करते हैं कि एसआरएच जो आपके साथ एकदम क्लोज मैच रहा था, हो सकता लोग होते हैं एकदम लास्ट मैच गया, लास्ट एकदम वो था सब कुछ, तो क्या लगता है आपको? आप एसआरएच से खेले, बट हम आप कहेंगे कि इंडियन अबाउट दी एसआरएच टीम की वो जीत पाएंगे यहाँ से? कितने 50-40 तो मार जीतना लग रहा है। मेरे ख्याल से मतलब बहुत इजी सेट हो रखे हैं, और जिस तरीके के भारत इधर भी मार रहे हैं भारत के पास, तो मतलब ऐसा लास्ट माना कि उसने देखा बॉलिंग में बिल्कुल ऐसे झटक छक्के मारे थे, और आप ही की टीम के आप ही की टीम की बैटिंग हमने तो बहुत लाइव देखा था, रिकॉर्ड हम क्लिप प्रोवाइड करा देंगे एंड में, जो 4 मानस को भाई इधर आएंगे आप। मानस भाई यही है, मानस भाई हमारे जानना चाहेंगे कि दिमाग देखिए, मानस जो है वो बी डिवीजन के हाईएस्ट विकेट टेकर थे पिछले सीजन, और रीजनल्स में हमारे एसयू की टीम के वाइस कैप्टन भी हैं ये, तो ये बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है। चले गए हमें छोड़ के यहाँ पे शामिल भाई। मानस चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं। क्या बोल रहा था तू? युगांडू फियर ऑफ किधर से लिया? फियर ऑफ किधर से लिया? सीपी भाई वो लोग ऊपर है। ये कब बना भाई? ये 2 विकेट गिर गए तो भाई बदल जाएगा। क्या बोल रहे हैं? 120 रन का देखा ही नहीं। फियर ऑफ का जैकेट भी 120 के साथ विकेट के साथ बढ़िया काम मत करो। अरे भाई साहब ऑलरेडी प्रेडिक्टेड है साथ प्रेडिक्शन कर रहा है, हर एक चीज अभी तक सही सीरीज ने दिखाई तुम्हें। कार्डिनल्स का है ना सत्ते की शिवम तो हर टीम से खेलता है। शिवम इज द आयुष सिंह ऑफ टीम प्ले। टीम नहीं टीम युगांडू तू भी गाड़ी
और वापसी हो रही है और दोनों टीम की क्या बोला टॉक में भानु भाई ने यही बोला होगा कि डोंट टेक प्रेशर, गॉट दिस गाइस एंड टिल द एंड, दैट विल बी मोटिवेशन कि एंड तक मैच लेके जाएं एंड ही बी एमिंग द विकेट्स गो कि यार इनको रन आने दो, इजी सिंगल डबल आने दो, ही right now because if these batsmen settle it will be nightmare for the SRH unit because मैं जानता हूँ भाई को ये बोला होगा कि पैक करने का कोई नीड नहीं है, गेम इज मच इनके अभी कंट्रोल में, just 2 more wickets and इनके ट्रस्टेड बॉलर विकेट दिस सीजन और MVP, he is the MVP of this season, बहुत अच्छी बैटिंग करी है। तो हमारे तेलुगु कमेंटेटर आए हैं, कुछ तेलुगु ఏంట్రా मुड्डी गिल्ली హార్డ్ లైన్ SRH టీమ్ ది ఎక్కువ ప్లానింగ్ స్ట్రాటజీ ఫ్లాప్ అవుతుందని చెప్పండి వాళ్ళ బెస్ట్ టు అకార్డింగ్ టు ద బాల్ ప్రకారం ఆడి ఎట్లయితే ఇప్పుడు జస్ట్ ఆకి 6 బాల్లు డాట్ వస్తే చాలు, జస్ట్ దే somehow their shoulders are down. Let's see what happens. So Ali bhai, what do you think SRH is doing wrong right now because of their I mean what the SRH is doing wrong is bowling short balls and over pitch balls. If you I mean personal आदि कह रहे हैं वो होते तो पकड़ लेते। बिल्कुल I personally think that SRH बेहतरीन ट्राई फ्रॉम पोटिनेनी sitting these many. What do you personally think was the reason? I personally feel that SRH was for wickets and then was amazing. एकदम यहीं पकड़ी The second ball was they failed to capitalize on like 3 overs they were 15 over game. What a big swing. and a miss. that SRH. This is Yashwant is known for because he gets those dot balls. एंड कह रहा था कि SRH ने जो गलती करी है वो कि यार इस टप्पे पे ball on this line and length they were either pitching it up too much or they were giving it too short. तो जितनी आप शॉट डालोगे चौके छक्के आएंगे, जितनी आप डालोगे उतने चौके आएंगे। हार्ड लेंथ ये देखिए, ये हार्ड लेंथ, ये गुड लेंथ बॉल्स आपको डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। विकेट टेकर क्यों है इस सीजन? करेक्ट और ये लाइन एंड लेंथ अगर आप रखेंगे तो आप सिंगल डबल भी नहीं दे पाएंगे, आप नहीं ले पाएंगे, प्रेशर क्रिएट होता है और यही फिर बैट्समैन को शॉट क्रिएट इन्वेंट करना पड़ेगा जहां से विकेट्स आती हैं। This is what happened with Yeah. he got 8 dot balls and he was going for it. He was trying different kinds. Look, that was a lovely ball. Amazing ball. Look, 5 balls, no room. Yeah, I think this is a very good decision by Bhanu bhai to bring on just after the break because intensity थोड़ा slow down हो गया और यशवंत के साथ सिर्फ एक ही नो की ओवर कम है यशवंत भाई के पास, पर वो चाहते हैं कि वो विकेट यहाँ पे ही निकाले। Looking to pick up wicket, तो वो एक प्रेशर क्रिएट कर देंगे जैसे डॉट बॉल्स के थ्रू। ये देखिए ये आ गई है हर्षित भाई नीचे बेहतरीन कैच यही what we were talking about, the pressure that Yashwant भगता हुआ बॉल पकड़ता हुआ बिल्कुल and to be catch that was brilliant ये catch. तो डॉज कर रहा है, बहुत मारेंगे साढ़े। That was the ball was really the ball was really high and then that was a really good take by catch Harshit और मैं bhai. यही बोल रहा अंडर था प्रेशर I have seen हर्षित कोई भी होता उसके नीचे तो आई डोंट थिंक कोई पकड़ रहा था बिकॉज बेस्ट फील्डर्स हैं एंड और यही मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से कि हर्षित भाई इज देयर बेस्ट फील्डर एंड ही वोंट ड्रॉप एनी कैचेस। आई हैव नेवर सीन हिम ड्रॉप कैचेस इवन अच्छे पोजीशन आए हैं, मतलब ही वाज रनिंग बैकवर्ड्स so he got under the ball and बहुत ही अच्छा कैच। though he was spinning in the ground while catch correct just executed everything and end में जो साथ में फील्डर collision there was no collision I think Harshit bhai called that and he came clean catch the over length over you
a maiden wicket, and it's like just an amazing feeling. और आते ये कह रहा था कि SRH की टीम they would want a break right now, they would want to slow down the innings, and that is what happened. And Bharat Yogesh was on full blast, he was going for every ball, and he got 4-5 dot balls and then a big shot in the air and caught. It's just creating a vacuum. And it was a very for good ball. big It shot. was almost a Yorker. Yeah. It was in the block hole, almost a Yorker, and that's why it went not six. This But is I all think the Bharat के साथ बहुत careless shot था ये, because you have another 9 overs and you would want your captain to Stay the crease. correct, correct. Because that's a big confidence booster for the entire team if the Correct. captain is on the crease. Right? और अभिजीत को वापस लाया गया और अभिषेक वापस अगेन ऑफ द अभी तो एक अभी बैटिंग पे एक अभी बॉलिंग पे क्या होगा देखते हैं अभी इस बॉल पे और ये बेहतरीन। बढ़िया बॉल बढ़िया अभिषेक शॉट बहुत कंपोजर के साथ बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा मतलब जो शॉर्ट बॉल है मैंने इनको सिर्फ उन्हीं बॉलों पे स्विंग किया है जो शॉर्ट बॉल्स हैं और जो बॉल्स हैं ऊपर आई हैं अच्छे टप्पे पे आई हैं लो हाँ और ग्राउंड यहाँ पर जो कवर्स पे ड्राइव जो मारी है सारी ग्राउंडेड मारी हैं और ये देख मोहम्मद जो कि MVP इस टीम से ऊपर प्लेयर और सेकंड है बढ़िया फील्डिंग डायरेक्ट हिट और ये रन आउट आई थिंक इतना रिस्क लेने की आई डोंट थिंक अभी नीड जरूरत है करेक्ट करेक्ट अभिषेक एंड उनका विकेट नहीं लेके जा सकते आप वो भी रन आउट पर मुझे तो लगता है जैसे ही मैच 20 ओवर जाएगा तो 120 कोई ऐसा टोटल नहीं है जो आप एंड में जाके संभाल बचाने की सकते कोशिश हैं। करो भाई मेरे ख्याल से अभी अगले 2 ओवर भानु भाई वुड बी गोइंग फॉर विकेट्स राइट मुझे लगता है कि अगर 10-10 रन भी जाता है आपका मेन काम नहीं है इकोनॉमी बचाना मेरे ख्याल से 2-3 विकेट आपको चाहिए अगले 3 ओवर के Correct, अंदर correct. ये 20 ओवर की गेम बची नहीं है करेक्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और ये बड़ा फील्डर के सीधा हाथों में और ये सीधा कैच और ये बहुत बड़ा विकेट एक जड़ी मत्ता भी आउट हो गए हैं जो दोनों बड़ी विकेट बेहतरीन कैच कंपोजर से पकड़ा गया Look, this is the vacuum that SRH wants to create to get. सबसे बड़े सीनियर प्लेयर ASUPL के सबसे सीनियर प्लेयर पवन महालकर अगर ASUPL ऐसे जीतना कोई जानता है ना तो इस इंसान से पूछिए ये सबसे बेहतरीन तरीके से जाते हैं करेक्ट और 2 बारी इन्होंने ट्रॉफी उठाई है ASUPL की तो बताइए अगर आपको अभी आप आते ही 2 विकेटें गिरी और दोनों सेट बैट्समैन आउट हुए और जड़ी मत्ता आउट हो गया दोनों सेट बैट्समैन आउट हो चुके हैं क्या ही बता रहा था कि RCB अच्छा चेस कर रही है बट किसी भी एक विकेट अगर गिरता है अगले 2-3 ओवर में तो ऐसा वापस गेम में आ सकती है और वही होता दिख रहा है दिस इज देयर गेम टू लूज नाउ फ्रॉम हियर देखिए इट इज मैं आपको बोला था अभिजीत विकेट पिक Correct, correct. यही इसीलिए भानु भाई के बॉलर है करेक्ट और जैसा ये टीम सबसे सीनियर एज टर्म्स तो वो कंपोजर वो एक काम माइंड और काफी खेले हुए खिलाड़ी हैं मजे हुए प्लेयर हैं तो इनको पता है कि थोड़ा ये इनकी बातें भी आई थी बट उन्होंने अपना कंपोजर रखा विनीत पुट्टराजू की भी विकेट इन्होंने ही निकाली थी नहीं इन्होंने विनीत पुट्टराजू की विकेट नहीं निकाली पर जो प्रेशर इन्होंने क्रिएट किया था विनीत पुट्टराजू पे वो था बहुत प्रेशर में आ गए थे और ये देखिए की अपील और नहीं है यहाँ पर कोई आवाज नहीं है पर यहाँ से गेम भानु भाई बहुत review लेने को डिफिकल्ट मेरे को लग रहा है RCB का गेम यहां से बहुत डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि एक बैट्समैन शॉट्स के साथ खेल रहे हैं भरत कुमार का जो है वो नहीं खेल रहे बैट्समैन इनके पास और वो इंपॉर्टेंट वो बैट्समैन बहुत इंपॉर्टेंट बैट्समैन है एंकर कर सकता है अभी एंकरिंग वाले बचे नहीं है अब मिडल ऑर्डर लोअर मिडल ऑर्डर आ गया है हाँ तो हो सकता है और प्रखर जैन भी मारते हैं शॉट्स हैं अच्छे शॉट्स मारते हैं का गेम है Need इसके साथ मोमेंटम आ गया करेक्ट बेहतरीन गेंद बहुत अच्छे से डिफेंड किया उस बॉल को अपना बैट और पैड के बीच में ओवर कोई की gap नहीं समाप्ति था। बहुत ही अच्छी बॉलिंग विहान भाई वापस बॉलिंग करते विहान भाई से साथ हुए दिस इज ट्रिब्यूट टू विहान फाल खुश हो गए विहान के नाम सुनकर विहान को वीडियो कॉल पे लेके आते को तो लग रहा है उन्हें दिखाते हैं कि फाइनल ऐसा दिखता हाँ है और विहान एक नहीं है को पता है फाइनल कैसा दिखता है बहुत करीब हाँ तो बहुत पवन भाई करीब से कैसा में पीला देखकर इस बार पता नहीं है एक पीला है हर्षित नीले पर अड्डी पीला ही पहन के आए हैं हर्षित नीला
बट पीला मैंने नहीं पहना था इस सीजन तो क्या ही पीला पार हमारे कैप्टन इधर। अरे शिवम भाई, भाई आ रखे हैं। शिवम भाई वैसे थोड़ा सिक्योरिटी में है, पर अपनी टीम रखवाली की सिक्योरिटी करते हैं, मतलब इतने हमारे हट्टे कट्टे हष्ट पुष्ट हैं हमारे शिवम भाई। अपनी छोटी टीम बॉल वाले और बेहतरीन अच्छे गैप में डाली, बढ़िया फील्डिंग और ये रन आउट। मोहम्मद भाई, दानिश भाई बहुत रिस्की सिंगल्स ले, और ये दानिश भाई बहुत रिस्की है जो कि दिख रहा है यहाँ पे। गुड बॉलिंग यार अभिजीत भाई। वो खुद देंगे। अच्छा आस्था ये हमारे वेद भाई को थोड़ा सा ट्रिब्यूट दिया गया अभी। और ये ओवर की दूसरी गेंद धनुष डीसी के नाम से जाने जाते हैं, और ये अच्छा बॉल, और ये अपील, और ये हवा में उछाल दिया भाई ने बॉल। मानस ललवानी ने नॉट आउट दिया। इट्स गिवन नॉट आउट बाय मानस ललवानी, द अंपायर, स्टैंडिंग अंपायर, एंड शामिन सेज इट्स एन आउट। द लेग अंपायर said that it's an wicket, but the main umpire hasn't raised his finger. What is it? They're consulting each other. क्या लगता है? And if you ask us outside the ground, we didn't hear anything. I don't think Arav also heard a thing. मेरे को तो कुछ नहीं सुनाई दिया। But the reaction from Bhanu Pratap is only showing that it's a wicket. यहाँ हमारे केकेआर के कैप्टन इतने उत्साहित होकर रिव्यू का इशारा कर रहे थे। एज रिव्यू ही दे पूरा। वीडियो पे है वैसे तो, अगर चाहें तो हम इसको रिवाइंड देख सकते हैं, पर वीडियो में भी आवाज नहीं आएगी। एंड समवन इनसाइड पिच, आई डोंट नो हु इट इज। युगांत, व्हाई इज युगांत कमिंग इनसाइड? आई डोंट नो आईडिया। युगांत पिच के बीच में है लोग। पिच के बीच में लोग अबे अंधे लोग। आपको लगता है क्या आपको आवाज आई थी एज की? मेरे को तो कुछ नहीं, मेरे को कुछ भी आवाज नहीं आई थी, बट द वे भानु प्रताप reacted, you know, celebrated, I felt that it's out, but there was no decision of the ball after going past the bat. बहुत calmly हम से आगे बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या डिस्कस कर रहे हैं। बट देखिए अब विकेट तो नहीं आ सकती, माना एडमेंट दिख रहे हैं, ये कंपोजर, और वो बहुत आराम से बता रहे हैं कि जो डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन है। और अंपायर को ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने बहुत लेवल के टूर्नामेंट्स में प्रेशर में डिसीजन चेंज होता है। हमने पटेल कहाँ पर हैं? जय क्यों किया जा रहा है मुझे समझ नहीं। ऐसे देखिए आप जहाँ पे अभी खड़े हैं, जो आप स्ट्रीमिंग कर सब कर रहे हैं, हम जय पटेल की मस्ती कर रहे हैं उसके साथ, उसका एक बहुत योगदान रहा है इस टूर्नामेंट को यहाँ लाने का। हमें चाहिए कि वो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, क्या करवाया टूर्नामेंट के लिए। लाइटें ऑन है आज एसडीएफसी की, वरना बंद हो जाती है इस टाइम तक। 9 बजे एसडीएफसी बंद हो गया था, पर फिर भी सारी चीजें कुछ है। तो जो पूरी मैनेजमेंट कमेटी, आई थिंक आयुष हो गया, जय और विराज आयुष ने तो बहुत काम किया है। विराज आयुष हैज बीन लिटरली द पिलर ऑफ ASUPL दिस सीजन। उन्होंने किया है इस सीजन, उतना जितना बोले उनके लिए उतना कम है इस सीजन। तो भी हमें बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए उनके। लेकर बॉल्स अरेंज करना था, सब कुछ किया गया दोनों। मैं को पहले ही बोला, मैं मेरे ख्याल से 20 ओवर का है ही नहीं। ये मैच आपका विकेट मैच, अगर बॉलिंग टीम जीतना चाहती है तो नहीं जाना देना चाहिए। बैटिंग टीम को अभी कंपोजर लूज नहीं करना चाहिए। विकेट गया पर कोई नहीं, पर आपका टोटल इतना बड़ा नहीं है कि आप अब प्रेशर में आके बड़े शॉट खेलिए। अपना 4-5 रन निकालिए ओवर से, डीप लेकर जाइए, और तब डीप में जो होता है वो आपको ज़्यादा फेवर कर सकता है। पर ये जो पिछले 2 ओवर प्रेशर की वजह से गए हैं, ये कॉस्ट कर सकता है। आई थिंक ये 2 विकेट्स जाने नहीं चाहिए थे, क्योंकि थोड़ा जो सेट बैट्समैन थे दोनों बैट्समैन, और दोनों का ऐसा लग रहा था कि उनको समझ में आ रहा है हाउ द पिच इज गोना प्ले आउट। और ये हमारा है, फील्डर तक नहीं पहुंचा। 1 बाउंस, जस्ट 1 बाउंस एंड 1 सिंगल। आई थिंक सिंगल्स ऑफ सकते हैं इस टाइम, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेसमेंट एज वेल कि बोथ साइड्स में अच्छा स्टडी किया। दिस इज भानु भाई ब्रिंग्स
करेक्ट। दानिश भाई का बैटिंग का तरीका थ्रूआउट द, उनकी हाइट अच्छी है, उनका बॉडी वेट ट्रांसफर बैकफुट पे जब भी होता है तो कोई भी जो राइज करके टाइम मिलता है कि वो पुल कर सके पूरी स्ट्रेंथ से, और उसी हिसाब से बहुत ही अच्छा शॉट, बहुत बढ़िया अच्छा शॉट, क्या लेट कट मारा है यहाँ पे, ये अभी ना दिल्ली दिल्ली की याद हुई हमें, डेविड वार्नर बिना चप्पल के बिना चप्पल के, तो आज उनको ट्रिब्यूट दिया गया दिलीप अली जी को हमारे। डेविड वार्नर वेरी गुड प्लेस अविनाश भाई। हमारे अब जा चुके हैं हमारे टीम से, अब उनका आखिरी सीजन था, हम उनको ट्रॉफी नहीं दिला पाए, आज ट्रॉफी कोई तो टीम उठाएगी और दोनों टीमें लाल पहन के आई हैं, तो आज ट्रॉफी लाल ही उठाएगी। लेकिन एक बड़ी बात बताते हैं आपको, आरसीबी ना ASUPL जीती है ना IPL जीती है, तो अगर आरसीबी जीतता है तो वो आरसीबी के नाम पे जो कलंक लगा हुआ है उसको पिछले सीजन की भी जो थी बहुत अच्छी टीम थी, शानदार टीम थी, पर एंड में जो सेमीफाइनल मैच था उसमें हार गए थे, तो क्या वो आप ही की टीम, मुझे लगता है आप ही की टीम थी वो। तू रिटेन होना चाहता है अगले सीजन? नहीं होना चाहता प्रजीत? ये RCLSD की पॉलिटिक्स। अभी पहले तनिष मिश्रा ने बोला था बहुत पारिवारिक माहौल है, ये देख पिछले सीजन Banu Bhai is back into the attack. He had 12 runs in his first over. Let's see what he can do. भानु भाई A की lot of अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद भानु भाई की। हर्षित भाई रन, that's the pressure the final बॉल ही brings. छोड़ गए। हर्षित भाई को भाग रहे हैं। हर्षित भाई zigzag Harshit Bhai looking a Pumped little लग रहे cheeky, हैं। little cheeky. He wants to get onto a batsman's nerves. Looks like SRH wants to get a winning title. भाई कैच का इशारा करते हुए बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन और ये बहुत ही अच्छा, Oh, what a field! What a field! बेहतरीन एफर्ट। नहीं है रोहित, अरे lovely. बेहतरीन फील्डिंग ऐसा एफर्ट बोल- का आप लोगों को दिखाते हैं। कमेंट्री बॉक्स बिल्कुल बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत अच्छी अपील की है अंपायर। कीपर को एम्पायर विकेट आउट देगा बोल के डायरेक्ट लेग एम्पायर को अपील। डायरेक्ट लेग अंपायर, This is- मानस भाई की इज्जत ही नहीं है। नहीं, मानस भाई ऑलरेडी एक नॉट आउट दे चुका है, तो उन्हें लगा क्या पता है लेग अंपायर दे दे आके। फोटो ही ले, छोड़ बुमरंग मत ले, फोटो ही ले। बेहतरीन, बेहतरीन गेंद, बिल्कुल बिल्कुल Flurry of बढ़िया appeals. बॉल था ये। अभिजीत भाई भी ज्वाइन इन कर गए हैं। जल्दी 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 बॉल डाल। एक Come again. एग्जाम नहीं गई, से बॉल गया, बेहतरीन बॉल। Thank you. बहुत ही अच्छी स्पिरिट्स में है SRH, नहीं आ गए, तो पेनल्टी लगाएंगे गेम 25 रन की। ये गेम का सही, यू नो द बेस्ट मूवमेंट ऑफ द 18.5 वो बॉल पे, लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स पे। जस्ट इमेजिन हाउ डू। बेहतरीन शॉट, हर्षित भाई का स्टॉप, दे आर ओवर द बैट्समैन, बहुत ही पंप लग रहे हैं हर्षित भाई। दे आर टू हिज हो रहे हैं, नोटी हो रहे हैं, तनिष गेटिंग नोटी बहन के हो रहे हैं। दिस इज व्हाट वी वर अब टॉकिंग हम- अबाउट बानु भाई's experience. अभी पे आएंगे 25 रन की, हमारे पास प्रूफ भी है। This is the experience that we are talking about. Banu Bhai's bowling. He's too ब्यूटीफुल 78 ब्यूटीफul स्टॉप। 78 7 runs per over का ball. Can be Selena with 6 overs. 36 इजी, चुप है। अरे बुमरंग है। चले पोस्ट में नोटी कमेंटेटर इज देयर। Lokesh is back to attack. दानिश भाई को अगर शॉर्ट बॉल वॉलीबॉल कोर्ट
इन्हें तो SRH वालों को अब तक जो लोकेश भाई डाले और उनको लेवल बॉल में भी देखा, he's not too he doesn't he just wants to outside off stump पे, he just wants to get his line. That is where he believes like end भी इनके ये एक विकेट भी निकाले। बहुत पूरा ओवर, लेकिन अभिषेक भाई ने पीछे अच्छा शॉट मारा था। हाँ बिल्कुल, लास्ट बॉल पे एक ही वाइड था, 5 डॉट बॉल थे और लास्ट बॉल पे जो सुपला शॉट जो सुपला सिटी मेरा बहुत ब्लंट वो मानो तो देखिए, एंड ऑफ द डे जब बैटिंग पे आता है तो दानिश भाई बैट कर सकता है, पर वो बैट्समैन है नहीं। बिल्कुल ही विल गो फॉर इट। बेहतरीन बॉलिंग शॉट बॉल था जी। तो मेरा क्या मानना है, एंड वो एक कला होती है कि आप अग्रेसिव ना भी जाके सिंगल डबल निकाल रहे बॉल्स पे। बिल्कुल, वो विद टाइम ऊपर बैटिंग करने से आती है तो वो टेस्ट रहेगा कि कर पाते। देखिए जैसे अभी इन्होंने बैट स्विंग करा, पर मेरे ख्याल बॉटम में था, फ्रस्ट्रेट हो रहा थोड़े बल्लेबाज कि बाउंड्रियां नहीं आ रही है, जो फ्रस्ट्रेशन के बाद विकेट्स आते हैं। एंड इस फ्रस्ट्रेशन पे अगर SRH को कुछ करना है तो उन्हें बस ये करना है कि वो अपनी लाइन लेंथ पकड़ के रखे, चल नहीं करना। और जैसा आपने बोला स्लो गेम नहीं है, लाइन का गेम है, बस लाइन डाले और बहुत ही शॉट छक्का है, 6 रन अगर छक्का, रोहित शर्मा शॉट। That is a beautiful shot, बहुत ही प्रेशर रिलीज शॉट था। छक्का मारा है, शानदार, देख के आंखों को आनंद आ गया, ऐसी शॉट मारी है। क्या हमें रोहित शर्मा याद आ गया शॉट देख? बहुत ज्यादा ही दिख गए रोहित शर्मा, ऐसी थप्पड़ करते बॉल को कि बॉल बाहर ही जाती है, और ये फील्ड को चेंज कर, ये फील्ड टैम्परिंग भरत भाई द्वारा। क्या हुआ क्या? आई थिंक बीटी हो गई हो कुछ। क्यों भाई? नहीं हुई। देखिए ये अब रहेगा कि जो प्लेयर के झाड़ पे चढ़े अपनी टीम को मैच डुबाएगा। एक राउंडेड एक का अच्छा शॉट था, पर मतलब भूल जाइए आप किस सिचुएशन में, वही तो आप बस अंधा हो गया टैग करे, छक्का आ गया, मेरे ख्याल से सिंगल डबल निकालते रहो। एंड अगर हम देखें कि कितने बॉल और कितने रन है, तो 36 रिक्वायर्ड ऑफ 5.5, तो रन बॉल अभी भी रन बॉल चल रहा है। तो इफ यू जस्ट प्ले ईच बॉल एज बहुत ही अच्छी एंड डोंट प्ले, बहुत ही एक और अपील, लेकिन कोई ऐसे रिस्की शॉट्स, डोंट प्ले रिस्की शॉट्स, एरियल शॉट्स। प्रखर राइट मांग रहे थे इस बॉल पे, बट आई डोंट थिंक राइट थी। नीचे थे शॉट मारने के लिए और वो वाइड नहीं था, तो गुड शामिन मानस लाइक कंपेयर। अरे तो वाइड यही तो यहाँ से थी। व्हाट थी, आंखों में बहुत ज्यादा आनंद आ गया, दिख नहीं रहा है तुम। हाँ भाई बिल्कुल उधर चले गए, कुछ इशारा कर रहे हैं लोकेश भाई को। बोल रहे हैं आइए मेरी टांगों पे बॉल फेंकिए, झांगो। और ये गुड गेंद। देखिए मैं आपको बोलूंगा, कुछ बॉल है पीछे कीपर को देखिए कैसे इशारे कर रहा है बॉलर को, और वो देख रहे हैं बॉलर कितना सक्सेसफुली कर पा रहा है। बहुत ठीक है कि यार नोट ही हो रही है थोड़ी सी यार भी। और बहुत ही अच्छा शॉट अभिजीत, ब्यूटीफुल, वन ऑफ द सेकंड बेस्ट फील्डर्स, बहुत ही अच्छा कैच, व्हाट अ कैच, ब्यूटीफुल। और यही कंपोजर, यही एक्सपीरियंस प्लेयर का, कि तो बॉल आ रही थी उनके पास एंड द वे ही वेंट टू द कैच, बहुत ही अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आगे रन करके गए और को बहुत इजी उन्होंने अपने हाथों में लिया। करेक्ट, बिल्कुल। के पास चने के जड़ पे ना एक छक्का आ चुका है, सिंगल डबल लेके। ये तो थोड़ी के आरसीबी की लड़ाई है, समझ में आता है। नहीं लड़ाई छोड़ी, गौतम गंभीर वर्सेस विराट पहुंच पाई है। करेक्ट, तो वो लड़ाई हुई, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ इमोशन, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक दानिश खान है तब तक कुछ भी हो सकता है।
नहीं करना, तब तक रूल आउट नहीं कर सकते। पृथ्वीराज जो कि बैटिंग करने आए हैं, आप उन्हें भी रूल आउट नहीं। आरसीबी की जो बैटिंग लाइनअप है वो भरत कायराजू इज नॉट हियर, बट उनकी बैटिंग लाइनअप सीजन जी नीचे है उनकी बैटिंग। बात ये रही है, अब जैसे पृथ्वी राज आए हैं तो उन्होंने देखा है वो बॉल डाल के बाउंड्री खा के भी हंस देते हैं। हाँ कला होती है जो बहुत कम लोग एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो मेरे को लगता है जो दो बैट्समैन अभी काम है ऐसा जो अभी बोले एक ना, कंपोजर ढूंढ रहे हैं। वो आदि भाई में तो नहीं है। भाई बाउंड्री को एक चौका पड़े, आदि भाई तो मतलब ऐसे गाली निकल जाते हैं मुंह से। दूसरा थोड़ी खाता हूँ, लेकिन बैक इनटू द अटैक। लगता है ये बहुत क्रूशियल टाइम पे बॉल डाल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये और यहाँ पर स्टैट्स पे पर्सनल भाई मेरे हो रहा भाई, मैं तो पहुंचा भी नहीं फाइनल। प्रॉब्लम रिटायरमेंट कैंसिल हो गई है मेरी। अगर लेते तो वेद भाई घर आकर थोड़े सेट हो जाते, स्कोर देते और फिर थोड़ा कुछ। अरे भाई वो पहले ओवर में जैसा भानु भाई का पहले ओवर में 12 रन दिए थे, उसके बाद अगले ओवर में आई थिंक मेक और ब्रेक ओवर है ये। इट्स लाइक ब्रेकआउट ओवर है ये। फिर पर्सनल हो रहे हैं। मैंने अभी एक कल परसों गौतम गंभीर का एक इंटरव्यू देखा जब ऑस्ट्रेलिया का फाइनल भी, तो आखिरी मैच में लोग हर ओवर में 4 टीम ला रहे थे फॉर अ लार्ज पोर्शन ऑफ द इनिंग्स। सो ही वाज दिस इज द फाइनल, दिस इज वन टाइम यू कैन रिस्क ऑल दैट यू हैव गॉट हियर। मोहम्मद दानिश खान एंड दैट्स अ कैप्टन्स विकेट। बहुत बड़ा झटका, ज्यादा बड़ा झटका। अब परीक्षित आ रहे हैं बैटिंग पर। हमने इतना इनको इस सीजन खेलते हुए देखा नहीं है। यहाँ से गेम एक तरफा मैं मानना चाहूंगा, क्योंकि अब बचा नहीं है गेम, गिर चुकी। परीक्षित पृथ्वीराज है, पर परीक्षित भाई जब मारते तब तो बात नहीं है। वो सुपर जायंट है, वो आरसीबी के प्लेयर रहे हैं। वो पूरे सीजन में उन्होंने अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन किया है। इंडस के और इंडस में भी आए हैं वो। और परीक्षित भाई को हम जानते हैं सभी कि वो कितने ही शानदार और बड़े प्लेयर हैं। भाई देख कहाँ पे है जय पटेल, उस दिन मेरे को लगा जय वो लोग स्कूटर लेके कारपूल करके सब साथ में गए और जय के स्कूटर में लेके सबके परीक्षित की स्कूटर थी वो पहले किस शिफ्ट पे वो आया चल के गया था घर मेरे। परीक्षित भाई बैटिंग पे आए हैं और गार्ड क्या मांगते हुए गार्ड सॉरी, हमारे थोड़े कान खराब हैं अभी। कान नहीं दिमाग। मेरे को लगता है कि अब बहुत फेवर करेगा ये सिचुएशन SRH को। बैट्समैन को जानता नहीं हूँ, मैंने उन्हें ज्यादा खेलते हुए देखा नहीं है। मैंने मोस्टली उन्हें स्टैंड्स में देखा है सपोर्ट करते हुए। पर आरसीबी नाम में ही दिक्कत है। ये मैं पिछले आरसीबी खेला था, ये आरसीबी नाम में ही दिक्कत है। इट इज लाइक अरे आप अभी कंक्लूजन पे जंप मत करिए। दिस इज द फाइनल, दे आर द बेस्ट टीम्स ऑफ द होल टूर्नामेंट, एनीथिंग कैन हैपन। वो तो हो सकता है, देखिए क्रिकेट का गेम है। और ये ब्रिलियंट बॉलिंग बाय भानु भाई पुटिंग हिज हार्ट इनटू दिस। करेक्ट। जो कह रहा था कि 100% नहीं 110% नहीं है आज ग्राउंड पे। अल्टीमेटली रियल टेक के पास आते दिख रही है। हम सभी रियल टेक, हम तो रियल टेक के ही प्लेयर्स हैं। मांगता हूँ, मेरी तो है मेरे पास रियल टेक। उठी यशवंत का गुड कलेक्टिंग गेम। रियल टेक वालों ने स्पॉन्सर किया। ये कमेंटेटर्स बहुत ही ज्यादा बिगड़ रहे हैं। हौसला चाहिए भाई, हौसला से भटकते हुए। और जैसे कि विकेट ज्यादा आई तो फील्ड में ज्यादा मंत्रण किया नहीं है। और ये अच्छी शॉट जी, जैसे कि आप कह इनका मैंने इन्हें खेलता देखा नहीं है ज्यादा बल्लेबाज को, बट मैं देख रहा है पे आप ऐसे शॉट क्यों नहीं देखा? नहीं, इस में इस शॉट की आपको कोई जरूरत नहीं है। इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट द बॉल डिफेंडेड देन यू कांट गो फॉर दिस शॉट व्हेन योर टीम लाइक 7-8 डाउन।
अच्छा बेहतरीन यॉर्कर गेंद, एक और विकेट। भानु भाई पिक्स अप वन मोर विकेट। डूबने जाते हुए पृथ्वीराज अपने घुटनों पे आ गए हैं। नंबर ये 69 शाइन दिख रहा है नंबर 69 आरसीबी की उम्मीदें कम होती हुई, तो सुन लिया। पृथ्वी आती हुई और आज की नए रेल खत्म बैट्समैन होती दिख रही है। अंदर आ रहे हैं। जीवन भाई जीवन- अंदर आ रहे हैं। जीवन भाई- क्या जीवन भाई इस आरसीबी की टीम को जीवन दान दे सकते पाएंगे? हैं। क्या बात है आदि। अगर जीवन भाई ने यहाँ पे आरसीबी की टीम को जीवन दान दे दिया तो मैं हो ये जाएंगे। कहूँगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट विक्ट्रीज इन ASUPL का बेस्ट विक्ट्रीज ही मानी जाए ASUPL की, क्योंकि इस सिचुएशन में मैंने दिख रहे हैं। हाँ आई डोंट थिंक वो मौका देने वाले हैं उनको। पर अभी फील्ड क्योंकि अब बॉलर्स आ गए हैं बैटिंग पे, पर नहीं, भानु भाई अपनी फील्ड पे टिके हुए I हैं। think that he is anticipating the batsman to go for a big swing, and that is why you see that people बाउंड्री are पूरी खोल दी है standing deep on the leg और side. ये too. लेफ्टी बैट्समैन आए हैं, लेफ्टी बैट्समैन, तभी वो फील्ड Deep में square leg पे अपने फील्डर खड़ा कर रखा है। लेफ्ट एक और मेरे को लग रहा है शॉर्ट बॉल के लिए जाएंगे या पैरों पे मारने की कोशिश। अमोक पे भाई मैं बहुत ही अच्छा स्टॉप यहाँ पर विहान फाल द्वारा। फील्डिंग विहान फाल, बहुत फील्डर है विहान फाल और उनकी शेडॉन शर्ट आज यहाँ ना होकर भी खेल। सही बात है। ओवर की समाप्ति इस ओवर, ये 2 विकेट मेडन ओवर आया है। ये मतलब मैं बात कपूर से करना चाहूँगा, मेरे साथ पिछला सीजन खेला है पंजाब के लिए, बहुत ही रोलर कोस्टर राइड थी। We didn't have any, we played under 4 overs left, Played our hearts out in all 4 our left, So 4 you overs, know, 36 when to we 8. look at this situation, that guy is not gonna let it go easily. He's not gonna let it because know about And him DC is back. DC is back. whenever ये- he's in the game he's very focused. He doesn't correct, want correct. a lot of opinions going around. He wants to believe, he believes in what he thinks, and that is why how Sometimes Bhanu you know, is. it's not about you do something that is absolutely risky. Sometimes it won't play out, but till the time you're too afraid to try it, you'll never know, because it's about winning a match. It's about like looking at where you want to take, strategizing a correct plan for it. See, Bhanu bhai for runs in this previous over, but he came to And he then got picked two up 2 wickets. wickets. So it's like these are the kind of risks that wins ये the game. बड़े बॉलर विहान SRH के की तरफ के 4 रन क्या है ट्विस्ट, क्या नया ट्विस्ट आ रहा है इस गेम मैं में? कह रहा हूँ मैच टिके हुए हैं, तब तक गेम बचा। जीवन के आते ही शायद जीवन दान मिल जाए आरसीबी की टीम को। आप देखिए दोनों बल्लेबाजों के नाम, एक का पृथ्वीराज, एक का नाम जीवन। दोनों उम्मीद की किरण दे रहे हैं आरसीबी बिल्कुल को। बिल्कुल, पर नंबर ये 69 लाइन एंड जो- लेंथ अगर आप डालेंगे तो जाहिर सी बात है कोई नंबर 10 का भी बैट्समैन आके आपको देगा, क्योंकि ये लाइन लेंथ गलत है, ये लाइन लेंथ गलत है। तो अगर ये लाइन और अराउंड आया है अपनी इन्होंने स्ट्रेटेजी जो है वो बदली है यहाँ पे, स्ट्रेटेजी एंड ओ व्हाट अ बॉल, भाई पी कॉन्स्टेंटली अपने बॉलर्स को एक इशारा देते हैं कि कहाँ डालनी है बॉल, तो वो This is what captain does. करेक्ट करेक्ट। पर मैं ये हाईलाइट करना चाहूंगा क्रिकेट एज अ स्पोर्ट एंड इट्स फैंस, आरसीबी बाउंड्री over, there was so much noise coming from their stands. I think थोड़ा stand से वो Another shot ball in the air और ये No man's नो Ball मैन होगी, लैंड, दो की कॉल होगी, बोलेंगे 2 की कि कॉल है batting और रन प्राप्त होंगे। बेहतरीन रनिंग। बेहतरीन, ये 3 में 6 चुके हैं ओवर, और ये जो रिक्वायर्ड रन रेट है ये 9 का है। तो अगर हम 3 देखें रन की और आवश्यकता है 3 रन और इस ओवर में, तो आप रेट को मेंटेन करेंगे, पर अगर आप उससे ज्यादा मार दें तो आप रन रेट को डाउन भी लेंगे। जब तक है उनको अपना ही खेलना पड़ेगा, चाहे जैसे भी खेलें। और ये शायद नो बॉल का इशारा होना चाहिए था, नहीं किया शामिल। अरे भाई थैंक यू भाई, हाथ तो मिला है भाई। अंशुल तूने क्या करी कमेंट? अंशुल भाई जबरदस्त बैटिंग करे। अंशुल भाई पुणे स्टार बैट्समैन। भाई नहीं खाता क्या? क्यों भाई? 1-2 आगे देख ले।
उसको नहीं नहीं है, चीज वाले हैं। अरे उसको कुछ भी स्पाइसी लग जाता अबे चीज है तेरी वो। तरह ही भी शॉट और ये बेहतरीन शॉट। लंबा छक्का, रन रेट को पूरा घेरते हुए छक्का मार दिया है। 9 से 7.5 की रन रेट पे ले आए हैं। बहुत बढ़िया मुकाबला। डीसी पिटते हुए थोड़े से, और अभी भी एक बॉल बची है। Prithvi hits one out of the earth. Beautiful shot. बस कुछ पीने के भी लाते ये शिफ्ट पे जाएगा हैं। तो ला कहाँ से? क्लोजिंग तक है। आज स्पीकर लेके आते हैं वहाँ पे। मैं भी यही बोला इसमें स्पीकर का रिकॉर्ड। भरत भाई की शिफ्ट है क्या? इसलिए नहीं खेल रहे? नहीं, भरत भाई यूटा में बिहान से डोना में। Prithviraj is the ray of hope. He's right. बढ़िया रनिंग। और ये आउट दे दिया। धीरे भागे हैं। अब कितने में? एक विकेट बचा है। भैया वहाँ का भी खा के आ रहा है कि नहीं? ओवर अप। चीज भाई चीज है। अरे यार स्पाइसी क्यों लिखा है? अबे वो क्या लिखा है? स्पाइसी ना। मेरे को तो चीज वाला ही फ्लेवर आ रहा है। वो लीमोन है। तू लाने। क्या 2016 का फाइनल भी आरसीबी वर्सेस एसआरएच? नो भाई ओ हाँ, आरसीबी जीत तो नहीं सकती है। जब तक पर जब तक पृथ्वीराज विकेट भी देखिए, आदि जी एक ही है। 2 बजे एक ही बची है ब्रदर। नहीं 8 डाउन हुए ना अभी। 8 ब्रदर 9 है। 8 है देखिए। वो देखना जीवन आउट हो गया। 1 to go। SRH के बट they are excited to lift it. बट SRH का आप जर्नी देखिए। दे वर लास्ट इन आफ्टर द फर्स्ट गेम ऑन द टेबल। बोल रहा हूँ इसी टीम से नहीं, CSK और CSK को कल ही हरा रहे हैं। बदला भी लिया है और ट्रॉफी भी ले रहे हैं कि आज मोस्ट उसमें। और भानु भाई जिन्होंने इस टीम को पूरा हराया है आज मैच में, अपना ओवर आखिरी ओवर डालते हुए। और ये बहुत ही ऊंचा बॉल, क्या लंबा। ये ट्रॉफी है या छक्का 6 है? रन। गगन चुम्बी बेहतरीन छक्का। शॉट। 18 रन की रिक्वायरमेंट। नो वरीज, जाएगा इस ओवर में जाएगा। 17 बॉल। बहुत ही बेहतरीन। पृथ्वी ने एक और छक्का मारा है अर्थ से बाहर। वाइड गेंद वाइड बॉल का इशारा, प्रेशर में भानु भाई। और 17 रन 17 गेंदों में। अब रन बॉल आ गया है वापस तबला। सिंगल नहीं ले सकते बिकॉज विकेट है, टेस्ट नहीं कर सकते पृथ्वी भानु भाई। बॉल जब KKR ने SRH को खेला था तब भी मैच पड़ा हुआ, पर भानु भाई ने एक ये पुणे इतना खुश क्यों है मुझे समझ में आया। यहाँ पे आई थिंक वो ट्राई कर रहे थे, वो आउटसाइड ऑफ। शिवम MI वाला गेम याद आ गया। 15 में पृथ्वी
एक और छक्का है। अभी भाई थोड़े कंसर्न दिख रहे हैं हमें यहाँ पर, गोटे थोड़े मुंह में हैं अभी। अरे 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 बेहतरीन शॉट। 4 नहीं 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 पच का और 2 रन लिए हैं। 9 रन टू विन है। बेहतरीन बैटिंग पृथ्वीराज द्वारा। If RCB want to win the match from that position that they were in 2 overs back, then I think we need to give a lot of credit for holding his nerves and attacking and sticking. बेहतरीन गेंद भानु भाई द्वारा। गुड कमबैक। आखिरी बॉल पे मेरे को लगता है इन्हें सारे फील्डर्स अंदर कर देने चाहिए। सारे भी नहीं, पर 9 रन ही रहते हैं, क्योंकि सिंगल जाएंगे आखिरी बॉल पक्का, बाउंड्री के लिए नहीं जाएंगे। पर आप ये सोचिए, ये देखिए बढ़िया सिंगल। बेहतरीन रनिंग। 1 रन गया एंड 2 ओवर में 8 रन। क्या लगता है अमोक भाई? दोनों टीम के अभी मुंह में हैं गोटे। मैं कुछ कह नहीं सकता है, सिचुएशन बहुत ही ओपन है अभी। एक बड़ा हिट पृथ्वीराज द्वारा और मैच बिल्कुल इनके हाथों में। तू मत बोला कर, जब बोला जिस टीम को Ashwant into the attack. Top wicket taker and MVP of this season. Can he hold his nerve, Amok bhai and Adi bhai? ओवर का मैच है। एक बड़ा हिट पृथ्वीराज द्वारा। ये आखिरी ओवर, ये बहुत अच्छा डिसीजन था that Bhanu didn't leave his best bowler for the last over because this match it will not go there in my opinion. बहुत ही गेंद, बहुत ही लेंथ की गेंद और बहुत सेंसिबली लीव किया गया। शायद पृथ्वीराज पूरा ओवर डॉट निकाले और आखिरी बॉल पे सिंगल ले, ताकि जो आखिरी ओवर है वो लोकेश डालेंगे, क्योंकि भानु के खत्म हो गए हैं और ये भी इनका आखिरी। अभी भाई का 1 ओवर बचा है अभी, तो आखिरी अभी भाई के ओवर खत्म हो चुके हैं। सॉरी हमारे थोड़े अभी भाई ने हमें बताया। तो ये छोटा गेंद और ये 4 रन द्वारा। बेहतरीन शानदार चौका, जान फूंक दिया गेम में। मोमेंट दिस इज इन द गेम। पृथ्वीराज 4 रन और यशवंत सांगी शेट्टी पे प्रेशर है अभी इस समय पूरी भी शोर मचा रही है ग्राउंड में और वापस आ गई है उनके और SRH मैं बता SRH के लिए बहुत प्रेशर सिचुएशन है। SRH हो सकती नहीं भाई, जो हाथ में फट चला लिया। मैं बहुत खुश हूँ इस बॉल पे क्या होगा। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी सोच के साथ कितने रन चाहिए और 9 बॉलें बची हैं। 1 बॉल का वेट करेंगे। 9 बॉल में 4 और पृथ्वी बहुत सेंसिबल। ASUPL फाइनल्स ऐसे ही होते हैं, जहां हमें लग रहा था 1 साइडेड हो जाएगा टाइम के बाद, वहां पर इतना क्लोज आ गया है गेम। अब आइए देखते हैं। हवा में कॉल नहीं कहते। कंफ्यूजन। 2 रन ले लिए हैं। 2 रन ले लिए हैं भाई साहब। 2 रन RCB का खेमा पृथ्वीराज ने। यहाँ मैं बताऊं कमेंट बॉक्स में हमें कहीं नहीं आया है। ये मैच है और ये पता जी हमें क्या सुपर ओवर भी देखने को मिल सकता है। नहीं मिलेगा। आया है कप्तान भरत भाई। Sometimes it's good omen that water is being brought out from the pavilion, but sometimes the cools down faster than the match. SRH समर्थक। गुड इंग्लिश भाई, गुड इंग्लिश। यहाँ MI सपोर्ट करते हुए
स्पाइसी है। आवाज निकल जाती और ये शानदार बॉडी भाई, बॉल बहुत स्टेबल है। पृथ्वीराज इतनी ठंडक के वो खेल रहे हैं। 17 गेंदों में 33 रन। फॉर द ऑडियंस दैट वाचिंग ओनली, I would like to say he's played just 70 balls and he's more 33. I'm saying कि पृथ्वीराज has scored 33 and last 40 ओवर की सिंगल लेने ही जाएंगे और कुछ नहीं करते यहाँ पे आखिरी ओवर की। और ये विकेट ड्रॉप, ओवर एक्साइटेड भानु प्रताप नयोदरी। मैच छोड़ा है, एक कैच छोड़ा है या मैच छोड़ा है भाई साहब। यहाँ पे पूरी टीम का मनोबल नीचे गिर गया क्योंकि कैच पे मैच था। इट्स ऑल हैपनिंग, इट्स ऑल फाइनल। यही है सबसे बड़ा काम ASUPL का। संडे की रात के 10 बजे है और अभी हम कुछ ही क्षणों में पता चल जाएगा कि कौन हमारी सुनहरी ट्रॉफी आज उठा। कैच अभी लेते भानु साहब जी तो यहाँ पे मैच आ जाता होते अभी तक, पर वो हुआ जैसा कि 2003 के वर्ल्ड कप में लांस क्लूजनर ने छोड़ा था, उन्होंने सेलिब्रेट कर दिया था। और वहीं पे ही हमारी जो साउथ अफ्रीका की टीम है वो वर्ल्ड कप थी, कहीं वो वापस रिक्रिएट ना हो जाए। यहाँ मैं अभी ग्राउंड पे नहीं हूँ, टीम्स खेल रही हैं, पर यहाँ मैं प्रणव जिन्होंने एक भी बॉल नहीं खेली है इस मैच में, आखिरी बैट्समैन अपने खेमे के आए हैं बैटिंग करने और एक रन करने के लिए 1 रन चाहिए। तो यहाँ पे चौका छक्का मारने के हिसाब से फील्ड भी नहीं लगाई गई है, फील्ड भी उसी हिसाब से लगाई गई कि सिंगल ही लेंगे। एकदम टाइट फील्ड। पहली बॉल ओवर की और नीचे छोड़, मैं लेकर आता हूँ। रख रहा हूँ ये करना सब क्यों? रुक जा। चलिए भाग भाग। MVP, how are you feeling? Good. 3 trophies home today. कोई तो कोई उदास, यही है हर दास्तान। By Prithviraj in the end. SRH is the team that lifts the trophy. It was a great, amazing, but some team has to win and some team has to lose. And today it was SRH took the victory. He played commendable in this innings. Senior player Hari Kiran Revanor is Hari. कैसा लगा मैच? देखा पूरा मैच तक चला मैच और हर्षित भाई यहाँ पे आए हैं हमारे साथ, बड़े प्लेयर है हमारे ज्यादा।
आइए आइए उधर चलते हैं फिर। वन मोर वेटरन रोहित भाई रोहित भाई रोहित भाई रोहित भाई को इधर बुला रोहित भाई आखिरी सीजन तीन सीजन रोने सेमीफाइनल आखिरी सीजन अभी खुशी के आंसू आ रहे हैं अभी ट्रॉफी रियल टेक के पास आ गए भाई. क्या बात है भाई, गुड अंपायरिंग है मानस भाई. भाई बंद कर दूं भाई, मुझसे भी तो हाथ मिला. एंड तक लड़े हो. सबसे ज्यादा खुश दिखता है हमको एक आदमी. मैं बोल रहा हूँ फाइनल में कुछ ना कुछ होता है. मैं बन रहा है कैसे भाई. तो यशवंत भाई, हाउ इज द फीलिंग, मतलब ऐसा लग रहा है आपको? It was ecstatic. We almost got lost in it, but yeah, we just and we knew he was going to take that ball anyway, so we kept our fielders close. It was just strategically. So what were your emotions after that catch drop from us with your ball? You were down on the ground, you were very dejected. So how are you feeling? I actually went and told him you dropped the cup. Only taking 2 cups. So, but beautiful performance throughout the season. So, about your performance as an individual, how do you feel? It certainly feels very. This is my season. I've already observed in my 3 seasons. First in the semi, last year we did in the 5 semis. So This was your place to हर्षित भाई, MVP and the MVP. Congratulations, beautiful. ये आरव जगह की एक सीजन जीता है हर टीम में. क्या खुश रहा है भाई, एक प्लेयर हो चुकी है. we are like born. You beat every. Wait. You beat every. DC except DC. अबे चुप है. 4 छक्के खा के फिर यही खड़ा. Listen, anybody who watched SRH's match will tell they won because they. Yes. For your team, clap your hands. 1, 2, 3. So, just imagine this is not the end of the cricket for us. See, Lokesh, this is not worth. Don't bowl. Respect the patience. Respect the team. It's not on a close. Since we are already under pressure so much, like margins. So don't. When it's like match is in our hands, we need to firm our grips. That's how the winning mentality. Okay, this is the last one. Really proud. Really proud. Last time. Just make it. SRH. 3, 2, 1. ए भानु भाई पकड़ो पकड़ो भगत रुक ना 2 मिनट सोच रहा हूँ. पकड़ो. SRH wins by 1. भानु भाई का पकड़ उसमें तेरा तो है. How are you feeling, Bhanu? How are you? Too good. Happy, like it was a close match. I expected it as a close match, but I never. What were you like that catch drop? The
second last over. It's okay. It happens. Like we need to move on. Like I need to concentrate on the field placement as well. So I don't want to hold emotions. Now it happens. Like it happens sometimes, but we need to. Why do you also ourselves? Beautiful batting. I feel that your team has played really well, but as a captain, the way you held on to the team composure, it's amazing. I mean, to be honest, the best captain that I mean, both of you guys. Tournament is won by the captain. So amazing. I respect that thing. I have always told you. I have seen that again. You're the best captain. Thank you so much. Amog है ना Thank you so much. Amog how started the captain. No, he just texted me this morning like saying that win for Punjab. I'm dedicating this win to Punjab. So the trophy is ultimately with Real. It was destiny, bro. Destiny. Already. So you got the sweet revenge. Yes. Not sweet revenge. Well on revenge. Well on revenge. मैं बता रहा हूँ आरसीबी नाम में प्रॉब्लम इट्स गुड दैट बोथ ऑफ आई मीन अच्छा यहाँ पे उस दिन स्पिन ने भी ये साला कप्पू नहीं ये साला कप्पू ओ भाई वो आरसीबी फैन है भाई भाई पॉज कर दूं अब इसलिए उसको बुला के बोल रहा Where is the जो भानु भाई ने कैच छोड़ी नहीं वो तो ऑब्वियस है उससे भी नहीं आई भाई पॉज इसको निकालो मेरी नजरों से अरे भाई ये लाइव आयो कैमरा स्टूडेंट को ट्रेन कर रहे वेटरन किसी कार्ड का है सुशील कुमार स्टोरी है इनकी सुशील कुमार वाली स्टोरी है इनकी इतना नाम कमाया इतना वो किया भाई वहाँ चलते हैं ट्रॉफी चलो कमेटी मेंबर आदमी है सर अरे तो दोबारा बोलिए क्या क्या करके आ रहे हैं आ रहे आ रहे हैं चलो वहीं तो पढ़िए मेरे को क्या हो गया वहीं तो दीदी नोटी हो रहा है आप बताओ भानु इधर आ तेरा फाइनल में इतना क्लोज मैच नाइस डिफरेंट मजा आ गया प्रेशर था प्रेशर तो था भाई इवन जो प्रेशर होती है उससे ज़्यादा होती है डिसीजन के ऊपर लेकर प्रेशर तो था बट ठीक है बेस्ट मैन विन ऐसा नहीं जीत गया और जिसके पेट में था थैंक यू भाई हाँ यार आप इतने गुस्से हुए तो कम से कम हमारे कप्तान जीत के लाया क्या बात जस्ट बिकॉज एक टीम मैं कैप्टन कर रहा हूँ मैं भूल नहीं दूंगा मैंने भी कैप्टन सीखी है और देखो प्लेयर तो आते जाते हैं लीडरशिप को बहुत कम लोगों में होती है सो लाइक जस्ट बिकॉज समवन इज अ गुड लीडर लुक एट दैट गाय एंड टेक लीडरशिप नोट्स फ्रॉम वेयर थ्रू द टूर्नामेंट छोटे छोटे मोमेंट से टूर्नामेंट डिसाइड करता है छोड़ता एज लगाता तो मेरी तो फट जाती कीपर बाउंस बैक ना वो मेंटेबल दिखा ही सही करा रिटर्न बेटर कंपोजर दे वन इट मुझे खुशी का वैसे पता ठीक है अगर जीत गए तो आ जाना वापस बॉलर बैठ गया I strongly believe
These guys like a trust. So if you give wrong decision, that means you are not willingly give the wrong decision. But I know it might be, but that is wrong to. I mean, I know. Even the. No, but see, what would happen if I gone to? I said not out on the field. Yeah? Like then if I get out, like I'm changing. I'm not very sure about it because I was still like. Okay, happens at the end of the day. They all because of their efforts, bro. God's efforts will be there. चल come not trophy. Hey, first you're being runner-up trophy. Dealing with that yeah. They were Mumbai Indians. This one is more I am the captain. Nobody gonna scold me. I am pretty confident. Nobody gonna scold me. I did very confident. We deserve to win. And the only problem. अरे वाट करनी यार I asked you to put C. Bowler is also yes, sir. चलो चलो चैंपियंस देगा या रनर अप देगा? चैंपियंस देगा तू, ठीक है। कमेटी में नहीं है।
खड़े होना जरा. Start kar. So right now we are starting with the the trophy is gonna be season, and that's Yashwant from. It is presented by our officer Mishra. Next is gonna be the best batsman for the season, and that Pawan from Mumbai, presented by President Patel. Next is the most valuable player. It's the MVP, and that's Yashwant again from SRH. ऐसे ही मारता है ये सब पीछे मारता है. And next we have our runner-ups. Tough luck people. Captains, all the team members, please. Performance to the season. Dominating performance. Lost by a margin of 1 run. You're in my heart. And finally we have our champions. Captain. Champion team SRH. Hey, go, everybody go. फोटो ले. Guys, one over here, please.
Boys, SRH on 3. 1, 2, 3. बोल देते कॉल करना वीडियो नहीं आया कर दूं बंद और एंड स्ट्रीम करना है ना थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग या कंक्लूड करके बंद कर कंक्लूड करेंगे कंक्लूड कर नहीं मैं इंटरव्यू लिया सबका कर दे लेट्स कंक्लूड एंड एंड कमेंटेटर आ जाओ अन्ना Thanks for joining us. Also joined us. नोट्स आदि भाई And few words from Adi bhai. Cha. Thank you for joining us. Frame बाहर है भाई. चलो जूम आउट Thank you guys for this season. Right, I mean, no one stayed at the top or the bottom for a very long time. It was constantly, and the top 6 were not finalized until the last game of crazy tournament, crazy season, and not a lot of effort, but of great effort by the best bowlers that we've seen in this season, and also beautiful cricket. Nowadays that is just batting that's happening, but all around cricket, good batting innings stuff, and also great. So Basically, this season it was like the low scores could be defended. That's what this season showed us, and beautiful. See you next season. Any words of wisdom? we'll be back Ah, we'll be back We'll be back Yes!